Yeah. Assalamu alaikum. My name is Riyaz, and we are conducting this session as part of MFIRD upskilling sessions. Um, I've been not doing well for the last 2 days, so I may be somewhat been coughing and I may be taking some breaks. So please bear with me. But otherwise, I had conducted this session some 2 3 months before. And Sabbai had said we this is somewhat very useful and we can do it again. Uh, just to give a perspective of how we can pursue our career in IT. And last time it was it was very detailed. I had given in very detail. I put all the slides I explained. I'll try to cover the same, but um, I'll try to cover up the major highlighting points without getting this session too long as well. But at any point of time, if you have any questions, you can unmute yourself and ask me. But if possible, if we could keep the questions to the last, that would also be better. And this is my name is Riyaz. I have around 20 years of IT experience. I did my computer science in Hyderabad, and then I did my master's in computer science from Arizona State University. And right now, I'm working as a senior solution architect in one of the property management company. And consistently, I have been um, working on multiple technologies, mainly database related things. I also worked on some API related security solutions as well. And right now, I'm in another property management company working as a senior solution architect. During my year, I faced multiple people, maybe in my community or in my masjid or in my, neighborhood or even at my office. Many of the colleagues, like uh, I do have an interaction with many of my colleagues, and I do tend to find out what how people are doing and all those things. I have a habit of interacting with the others, and during that interaction, whenever something comes up, I used to guide them. And it do happen, I many of my colleagues, they brought their um, known circle to me to guide them on career perspective, and that's how it started. And during my career, alhamdulillah, it happened so that I was able to guide many students depending on their needs, and it turned out very fruitful for them, and they got into jobs. Whether it was either a fresher or whether it was a person who had some experience but wanted to switch, a technology or switch a completely different career. Uh, since I'm mostly related to IT, I know about how IT is doing. I know the internals of the company's house work. So I'll try to cover most of the things related to IT. But this is something you can take it as a format, and then you can do it for any other job as well. But this is the background about me. Now, why did we take this topic of anybody can switch a career or fly high with a career in IT? Um, we all know pandemic created a lot of um, uh, economy stopped because of pandemic, because of the lockdowns and all those things. But one thing that did not stop was an IT field, because most of the IT staff were working from home, and the things that went down came up again. For example, the landline business, the broadband, which was something it was not in demand. It went up because people started working from home. They needed a dedicated connection from home, and broadband business started its boom. And with that, the demand also started to work from home. Lot many companies, they are giving the facility right now
for people to work from home, and not only IT related, but many of the things that don't need physical intervention are being outsourced, and that work from home, which was supposed to be a facility, which was supposed to be a perk when working for a company. Now it has become a part of life. And many of the companies are giving this as a incentive right now, and many of the employees are not willing to join any company if they don't have work from home kind of an option right now. So what happened in pandemic was, the demand for companies going online, to be able to be serviced remotely. The demand for that increased, and most of the companies started their digital transformation journeys, where they ramped up their facilities to provide ability for their employees to work from home, and that created an immense demand for an IT sector. And with demand comes, attrition as well. Attrition is nothing but, how many people have resigned in a company. So this was when I prepared the slides last 2 3 months before. I just did this Google search. You can also do the Google search, and you will see, the attrition rate, how much it is. The big companies in India right now: Infosys, Wipro, TCS. I remember in my company, when attrition was, 6 to 7%, it was flagged as a very, a concerning kind of a thing. And if it touched somewhere around, 8, 9, or maybe 10, and, manager was being asked into meetings, and they were asked, why such a high attrition is being up. Basically, 10 means, in 100 employees, 10 people are resigning kind of a thing. But if you see right now, TCS, Wipro, Infosys, they are battling attrition at 25%, 22%, 15% kind of a thing. This is back in 2 months before. Now also the same situation, you know. And basically, if you look at a TCS kind of a company or Infosys kind of a company, 100 may 20 to 25%, or maybe in 1 lakh kind of an employees, they have requirement about 25,000 employees, or 2 lakhs बोले तो 50,000 kind of an employees का requirement है. And with that such high in demand, you know, getting uh, getting professionals who are knowledgeable, who are who can do things, is also in high demand. People who can talk, who can do things, who have an understanding of an IT, they are getting hired like anything. And like they say, "वो मांगे कि even दे रहे हैं" kind of a thing. That is happening right now. And people are getting, getting paid very heavily for if they have an experience, and if they can handle multiple things. So this is the situation in IT market. And with that, we felt that if we can do a session on this, where we can encourage people to shift their careers to IT, or maybe some people are struggling. I have one person in my company, in my group. He had a PhD in mechanical engineering. Now he is into an IT career because he couldn't get a good pay salary in his field. Now he's into an IT company. So so that's the case right now. So most of you, I suppose, I'm hoping the situation may be that. And what I'm going to propose right now is a systematic approach as to how we can shift our careers into an IT. So with that, we'll proceed. Um, Now, this attrition, as I said, companies have this much attrition. Why people are resigning? Because there is a high demand for people who have an IT skills. Now, with that, it also brings us an opportunity. If you see here, that's an Rahul Jain, who is an IT delivery manager on LinkedIn.
Cognizant is at 31%, Infosys is at 25%, and Wipro is at 22%. And with this attrition, there is also an impact to the company, and there is an also opportunity for the people out there. So these high numbers, like tells about three things. One, IT skills will continue be in high demand. The game is to keep upskilling. No, this is also a great news for freshers. TCS alone, planning to hire 80,000 freshers. And people will go where they are paid more. This is obviously the case. Right now, I have a friend who is into providing staff HR related services to companies, and they do this manhunting, and then they also provide this resumes for the positions to the companies. He's saying that right now the situation is such dire, like a person who is very good in his field is previously, he used to get one or two offers, and then they used to negotiate between the employers, and then finally when the time join, they used to join when the time is to join. Now the situation has become so rampant that right now the person who is well versed in his career or in his profession is negotiating with around 8 to 10 offers in hand. Basically 10 companies have given him offer, and the situation is when the time of joining comes, we don't know where that person is going to join, which company is going to join. And that is the demand from the person. Companies are hiring, you know but the thing is, the employees, they are taking not just one or two, they are taking 8 to 10 offers in hand. They are negotiating between employees, they're getting increments, they're getting much better offers, and then the day of joining comes, we don't know where that person is going to join. Previously, this company, who provides such services, they get profit when that person joins, right? So he's saying almost 80% of the staff that they are providing are not joining, because they are coming up um, with 8 to 10 offers. We don't know when that going to join. So that's how the situation is in the market right now, and this is going to continue for some time. And that's the reason it's good that if we think about, if we can shift our career into IT. So there is a lot of demand and the supply is very less. This is the best time to shift right now. And even for the persons who are in IT, but they wanted to do some career change, career growth. So this is also a possibility right now. There is a professional growth in there with respect to skills, money, and all those things. Much better companies are there. These are companies that have listed: Cognizant, Infosys, Wipro. These are known IT companies, but there are many companies that have an IT division and they are hiring like anything. So you don't need to specifically work for a particular IT company with a name. All we are concerned about is landing up in a good company who pays good, and that takes care of a lot of our things, right? So that's one of the things that I wanted to highlight in this slide. Okay. Now, the challenge is, um, we all know, okay, there is an opportunity in IT. We can shift in IT, right? And it's a good opportunity. There is a good pay. But the most difficult thing to adopt or change, to a new field is one, we have a self-doubt, I don't know. I was not good at mathematics. I don't think much, programming मेरे दिमाग में पड़ती नहीं है. I cannot, I cannot think on programming side. मेरा दिमाग बना हुआ नहीं है उस kind of thing. So एक doubt होता है कि we doubt ourselves.
like, whether I हेलो can do it. जी अस्सलाम वालेकुम Walaikum salam. Ji, ji. Anything you wanted to ask? ये थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका Uh, is anybody else also facing the problem? Uh, it's good for me. I can able Yeah. to hear without breaking. Okay. It's good for me as well. Yeah. Maybe you can just log off and rejoin, please. That should be better. Yeah, Okay. no, Okay. no, Ji, thank you. Yeah, if you hear any such, if my voice breaks or something like that, please do stop me. But one of the things is like, we doubt ourselves. I mean, it's such a general perception, even in an IT or even in a particular field, you might have seen like, a person who is doing one particular kind of a uh, skill, who's having one particular skill. If we ask him to do another thing, first thing is we doubt ourselves. Somebody are very good in expressing, and I don't want to do it. I don't know. But some are inherent and they don't want to express that, and then they just back off from doing that. So, and we're talking about shifting a field. I mean, say suppose like I told you an example, right? We have an example. I have a person in my um, in my group who is a PhD in mechanical. Now he's into IT. When he joined, he had, when we interviewed him, he had all that essential knowledge about IT. But when actually doing the work, he was so much doubtful about himself. Like, I don't know whether I can do it. Or he was like, you know, kind of a kid asking, can I do it? If I do it, what will happen? Kind of a thing. Like, very little questions. At first, we thought strange, but like then I realized, okay, because this person has shifted his career from a mechanical background with a PhD, which is something in with the job now into an IT. Now he is not well versed with the processes of the company. So the many things that a person doubts about himself. So how can I settle in a so one is the self doubt. Like can I change to an IT, or can I change my field? Can I change my career? This is one of the things that stops us. Okay. The second is unknown. Yeah, nobody wants to swim in unknown waters, right? I mean, that's the case. Like, if I go, um, what will happen? I don't know how that field is. I don't know whether I will be able to survive or not, kind of a thing. So we don't know what is there in that particular field, or what is there in that particular. If I try to adopt a new skill, I don't know what will happen. We don't know about that. So that is the fear of unknown. And the obvious fear of unknown is the fear of failure. Like, if I start venturing into it, like, I'm obviously going to fail. A person who is doing good, like, in a particular skill, particular job, he's good at it, and he gets that recognition that he's a good. But at the same time, it's not a well-paying job, or maybe his needs are not getting satisfied with that, and he obviously like good at thing. And if he plans to change, there is a fear of failure or something. Like, this is something like most of us try to avoid. Like, there are two things. One is a fear of uh, fear of failure is one, which makes people adopt things to be a successful kind of a thing. So this is one of the things that stops us from adopting to new things. And another thing is, we are so much into our comfort zone. Like, I'm very good in doing these things. I can easily, even if you wake me up in the middle of the night, I can just, um, I can start doing things without, I don't have to think much about it. That's a comfort zone. Anything new we wanted to do, that takes us, out of that comfort zone. And we are, most of us, like, even very experienced professionals, they have this thing. I used to face this problem quite some time before. I am very comfortable in my comfort zone. I cannot think outside. I don't want to do anything outside my comfort zone.
So that's the reason, like, we don't go about it, go about it. And obviously hurdles will be there, and it's hard to succeed, like, um, why should I do it, kind of an attitude, right? I mean, I'm happy with what I'm doing, or maybe I'm getting less, but if I go there, I'll fail. It's very hard. Should I kind of stress myself into doing it? And all this kind of an emotions. These are the things, like, that immediately, unknowingly, uh, starts creeping into our mind, and it makes us um, not to do or not to pursue things, right? So, should I change my career? If I plan to change my career, these are the things, like, I doubt myself. I don't know about it. I'm doing good. Like, if I go there, I'll fail. Why should I do it outside my comfort zone? Do I need to, मैं इतना मेहनत करना पड़ेगा क्या? And this is one of the major things that is stopping our, most, especially, like, Muslim community. They are not willing to work hard, kind of a thing. So these are the things that are there. It stops us. And now, with this, if anybody is not, Am I audible? yeah, you are. Any question? Yeah. So isn't this cannot think outside also fall under homesickness? Gee, they're two different things. Homesickness is, you want to be at home, or you want to be with your, Comfort yeah. zone can be compared with homesickness. That जी जी homesickness. नहीं, कंफर्ट जोन इज लाइक, आप जिस काम में आप आसानी के साथ कर सकते हो, उसको छोड़ के कोई और नया काम करना आप नहीं सोच सकते। आप एक पर्टिकुलर काम करते हो, फॉर एग्जांपल मैं हूँ डेटाबेस का आदमी हूँ मैं, ठीक है, मुझे डेटाबेस का काम आता है, मैं आई कैन इजिली थिंक अबाउट डेटाबेस थिंग। नाउ इफ यू आस्क मी टू डू समथिंग एल्स व्हिच इज, से सपोज, पता नहीं मैं हाउ डू आई एक्सप्लेन अबाउट इट, एक प्रेजेंटेशन देना है, मैं मतलब दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय थिंग। लेट्स से सपोज, लाइक, मुझे कोई नई टीम, मुझे एक टेस्टिंग टीम मुझे हैंडल करना है। अब वो टेस्टिंग टीम मुझे मालूम नहीं है क्या करती है, या फॉर एग्जांपल मुझे कोई क्लाइंट से बात करना है, मैं कभी बात नहीं किया, मैं क्लाइंट से बात नहीं किया, मुझे जाके उनसे बात करके उनका अंडरस्टैंड करना है, फिर उसका एक रिक्वायरमेंट लाना है। दिस इज लाइक, आप जो काम नहीं करे, वो काम करने में आपको जो 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 डर महसूस होता है, या जो आपको फियर महसूस होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड, लाइक, यू आर थिंकिंग आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो आप जो काम कर रहे हो, आप बहुत पहले से काम कर रहे हो, लाइक, आपको मालूम है कि मैं बहुत आसानी के साथ कर लेता हूँ, दैट इज योर कंफर्ट जोन, राइट? यू माइट हैव लर्न दैट वेल बिफोर, यू माइट, फॉर एग्जांपल, जब मैं इंजीनियरिंग करा, कंप्यूटर साइंस करा, ऑब्वियसली मैं कभी जिंदगी में कंप्यूटर साइंस नहीं करा, लेकिन जब मैं कंप्यूटर साइंस करा, फिर कंप्यूटर साइंस जॉब हासिल करा, अब उसमें भी कई सारे थे, तो उसमें मुझे जो एक मेरा मेरा एक एटीट्यूड बन गया कि मैं काम कर सकता हूँ, तो दैट बिकेम माय नेचर, एंड दैट नेचर इज माय कंफर्ट जोन। तो ये आप काम करने में आप आसानी के साथ महसूस कर सकते हैं। कोई और काम दो आप, वो आप काम नहीं कर सकते। दैट इज काइंड ऑफ थिंग। सो कंफर्ट जोन मतलब आप जो काम कर रहे हो, कोई भी स्किल हो, आप फॉर एग्जांपल एक सीए हैं, से सपोज आप मैथमेटिक अकाउंटिंग में हैं, आप अकाउंटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप अकाउंटिंग को छोड़ के कोई एक प्रोसेस ओरिएंटेड जॉब में आपको लगा है, फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल प्लांट में आपको बोले कि भाई ये आप देखो कि इसका आउटपुट सही आ रहा है नहीं है, सो दैट इज थिंकिंग आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप वो काम नहीं करें, वो काम नहीं करने पर आप कोई दूसरा काम स्टार्ट कर रहे हो, या यू आर डूइंग thing which is you haven't done before, that is like, that is what you're planning out of your comfort zone. Homesickness is about, like, आप, मैं हूँ हैदराबाद से, अब मैं अमेरिका गया, अब मुझे घर याद आ रहा है, मैं
अमेरिका में हूँ, अच्छी कंट्री में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इंडिया पसंद है, मुझे इंडिया में रहना है। या फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली से हो, हैदराबाद आए हो जॉब के लिए, आपके घर वाले रिश्तेदार सब आप जो है आप हैं दिल्ली में, आप जाना चाहते हो दिल्ली में, या फॉर एग्जांपल बिहार में है, या यहाँ का बंदा कोई वहां गया और या हैदराबाद वापस आना चाह रहा है, काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज होम सिकनेस। सो आई होप दैट इज क्लियर। इज दैट? Yes. जी Yeah, yeah, ठीक है। I have a question here. जी Yeah, I have a question here. जी So one challenge what I noticed for the people who are coming from professional non-IT background to IT background, हम्म they're learning the necessary skills, but they're हाँ not getting any practical hands-on or live projects to get जी some hands-on on that part. जी 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 So is there any way to overcome this challenge? I'm going to cover those things in my session. So let I mean keep your questions till the end, and we will discuss this inshallah. Okay? Yeah, So sure, sir. Riyaz bhai, should we keep a rule to ask all the questions the later of the at the end of the session so that every point gets otherwise gets covered? exactly, yeah. Please let's keep all your sessions questions till the end, and then we'll cover it up with the end inshallah. Okay? Okay. Jazakallah. And this is the emotions. Now, once we are clear about emotions, uh, see, all this is about दिमाग में कुछ चल रहा है. Everything is दिमाग. मेरा दिमाग डाउट में है, मेरे दिमाग में कुछ मालूम नहीं है यार. हो सकता है कि मैं जो है आई मे फेल लाइक डूइंग थिंग्स. हो सकता है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, काइंड ऑफ थिंग. ये सब दिमाग की चेंज है. मतलब दिस आर ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन टू माई माइंड, and mind is the one that controls. So only way to do this thing is to change our mind, change mindset. There is something called a fixed mindset and a growth mindset. And I just um, mm, uh, talked about an IT career. Now there are like many things that goes when you plan to change to an IT career, right? There are skills there are challenges is there is an effort is needed. Obviously you need to continuously get a feedback, and then you also need to be prepared about setbacks and everything. एक fixed mind क्या होता है, मतलब जो comfort zone का mindset होता है, भाई ठीक है, जरूरत नहीं है, ये काम में चल रहा है, kind of a thing. So it is innate, it's unchanging, you know. And challenges, why do I need to check challenges? मुझे आराम के साथ हो रहा है, right? I mean, let me क्यों इतना प्रेशर लेके काम करूं क्या, काइंड ऑफ ए थिंग. सो समथिंग टू अवॉइड, एंड अनदर मेजर थिंग जो स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स में या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स में जो होता है, कोई भी हो, डरते हैं कि भाई मुझे ये मालूम नहीं है बोलने के लिए डरते हैं. सो दैट दैट चैलेंज इट रिवील्स माय लैक ऑफ स्किल. There's nothing wrong in it, it's just that you need to understand, it's not everything everybody knows in a company. So that's that's the challenge. Most of the people fear कि अब मेरा, अरे ये बंदे को इतना एक्सपीरियंस है, इसको ये भी मालूम नहीं है क्या, kind of it. So it will reveal that lack of skill. चले गए. Please, if you're not you can Keep go your unmute phones yourself. on mute. Yeah, Keep your please. phones on mute. All participants requested to keep your phones on mute. Ji. So, but a challenging mindset, growth mindset, okay, let's try to embrace me. Let's try to see what it is. And obviously, it's an opportunity for change. I don't know, मुझे मालूम नहीं था. Let me learn about it, kind of a thing. Or maybe हो सकता है मैं पढ़ा था, भूल गया. Let me find it out about it. And challenge जब होता है when you consistently get bogged down with challenges, it seems a lot to take it out. So that calls for perseverance. आपको एक patience होना पड़ता है कि भाई हाँ मुझे मालूम नहीं है, मुझे सीखना है, एंड सीखने के लिए जो है स्किल, मतलब एक डेडिकेशन, टाइम लगाना पड़ता है, काइंड ऑफ ए थिंग. सो नाउ आई नीड टू बी वेरी पेशेंट, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी लाना पड़ता है, एफर्ट. मतलब एक फिक्स्ड माइंडसेट का क्या होता है कि भाई मुझे जरूरी है क्या, वाई अरे बंदा अच्छा नहीं कर रहा बोल के एक अननेसेसरी टैग लग जाता है, व्हाई डू आई नीड टू डू, काइंड ऑफ ए थिंग. नो,
चेंज इज एसेंशियल। ग्रोथ माइंडसेट का एक होता है कि आप अपने दिमाग में डालो, नहीं मेरी फील्ड चेंज हो रही है या मुझे चेंज करना है ताकि मैं बढ़ूं, तो एसेंशियल है। एंड मैं जितना मेहनत लगाऊंगा तो उसमें मैं कमाल हासिल करूंगा। एंड आज जो डिमांड है वो people with mastery, skills in mastery is something like, mastery in skills, we something that, that leads to mastery in skills. And that is something that creates a demand for you kind of a thing. So we essentially need to improve our skills. Obviously, feedback क्या होता है? अब obvious है कि कोई भी चीज आप नया काम करते हो एंड आपकी एक आदत है एक पर्टिकुलर फील्ड में, यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ डूइंग एक्सलेंट वर्क और मेकिंग इट वेरी to the par excellence kind of a thing. So when जब आप नया चीज करते हो तो एक चीज आप अपने आप को कोसते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मतलब सिंपल, दिस इज समथिंग नॉट गुड अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडर्ड्स, सो यू टेंड टू जज अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टैंडर्ड्स. The second most thing is like, you always um, um, you become defensive, like, आप substandard काम करते हो तो you become defensive, right? So फीडबैक अभी भी लाते हो तो अब कोई बोलता है भाई अच्छा नहीं कर रहे, समझो, या मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग, लेट मी इम्प्रूव ऑन इट. एक माइंडसेट होता है कि यू टेक दैट फीडबैक एंड यू अंडरस्टैंड दैट फीडबैक एंड देन यू इम्प्रूव ऑन इट. एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि डिफेंस बना लेता है भाई यार ये है बस सिंपल. आप यू टेंड टू डिफेंड योर वर्क, आई मीन यू टेक इट वेरी पर्सनली, आई मीन आप अपने आप पे लेते हो. नो, growth mindset क्या होता है? Obviously, like, there are multiple things. People genuinely get feedback, or people give feedback just to discourage you kind of a thing. In both cases, you take that as a useful and a positive feedback, you welcome it. And then there are some things that are obviously like done to discourage you, and there are genuine feedbacks out there, so you take that feedback and you improve on it. कोई बोलता बोलता है भाई आप ठीक है, मतलब दिस इज वर्किंग फाइन, लेकिन अगर आप इतना काम कर लोगे, ये कर लोगे तो इट कैन ट्रेमेंडसली इम्प्रूव योर प्रोग्राम और योर वर्क काइंड ऑफ थिंग. सो दैट इज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स. तो हर कोई आपका टांग तो नहीं खींचेगा. Obviously there are like multiple feedbacks are there, and that's how you improve your skills, right? I mean your communication skills, your collaboration skills जो बोलते हैं, that's how you try to improve yourself. And obviously like अगर कोई सेटबैक आता है, कोई obviously कोई हर काम में कोई जरूरत नहीं है कि आप हमेशा सक्सीड ही हो, हर जगह आप फेलियर होते हो. तो फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि यू ट्राई टू ब्लेम अदर्स, मेरा नहीं है वो बंदा कर रहा है इसलिए आई वाज डूइंग इट एंड देन ही डिलेड इट काइंड ऑफ थिंग, एंड आप इजीली डिस्करेज हो जाते हो. एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आप जब कोई भी एक अनहोनी चीज होती है, यू डोंट you didn't expect this to go in south, down south, right? You all just expect to go it up. Now it went down. So now why is it that went down? You take an opportunity to learn about its mistake and then you focus on making changes. So it's about like uh, uh, these are not taught inherently, but these are the things that happens in mind. And if you go with a growth mindset, a lot of things can be very positive. Most of the culture right now is about like defensive culture हो जाता है, या लेग पुलिंग कल्चर में हम लोग हैं. काफी सारे बंदे मजाक में भी लेग पुलिंग करते हैं. अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती लेकिन होता है, लेकिन देयर इज नथिंग टू टेक इट नेगेटिव सेंस. सो you always need to work hard, and given any field. I started my engineering back in 94, 98. Now I'm looking at the engineering field, the changes that are there and it's tremendously changing. And every day, the skills that are there, the languages, the programs, the kind of technology was there. It's changing consistently. But one thing that is required is, hard work. एंड थोड़ा सा मेहनत लगाओ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए बिग चेंज. थोड़ी सी मेहनत आप लगाओगे, आसानी के साथ आप स्किल्स हासिल कर सकते हो. थोड़ा सा अपने आप को जो है पेशेंट रखोगे थोड़ा सीखने के लिए, यू बी पेशेंट, यू कैन इजीली लर्न एंड एम्ब्रेस थिंग्स. एंड ऑब्वियसली जब आप मेहनत लगाते हो, नई चीज सीखने के लिए लगाते हो, जब आपको एहसास होता है कि आई have become
master into this particular skill, and that clearly gets visible. Like, in a team, if you have more skills, let's suppose like, you're a team of 10 members and सब एक ही चीज पे काम करते हैं, एक ही टेक्नोलॉजी पे और एक ही रिलेटेड स्किल पे काम करते हो, and but you put an effort, you learn more ways of doing that, and obviously that gets visible in the team, you know. एंड विजिबल होने का मतलब ये है कि लोग आपसे आके पूछते हैं, भाई ये कैसा करो, ये कैसा करो. यू आर नॉट ऑन द रिसीविंग एंड, यू आर ऑन द गिविंग एंड. आप दूसरों को देने में लग जाते हो कि हाँ भाई ये करो, ये ऐसा करो, दिस इज नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा करो. नाउ यू हैव बिकम ए मास्टर इनटू दैट स्किल एंड दैट gives an immense satisfaction, but that requires an effort. ठीक है. So, and obviously, like, not every journey is always high. You go down, you learn from it, and then you come back. So you always need to change your mindset. So one is like, we started with this, like, right? We started with these fears in mind. Now, if we can change our attitude, nothing is impossible, right? I mean, कुछ भी हो काम करना है, कुछ भी हो पढ़ना है, मेहनत करना है, हाँ समझना है, नहीं समझ में आया तो जो समझते हैं उनसे पूछ लेना है, काइंड ऑफ ए थिंग, एंड देन वी कैन डू इट. आई मीन इट्स नॉट, आई मीन कोई भी चीज हो, बस हमारे दिमाग में जो है वो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, एक रोड ब्लॉक है जो हम खुद बना लिए हैं, एंड दैट इज समथिंग लाइक इट्स स्टॉपिंग अस नॉट टू ग्रो फॉरवर्ड. बट अगर आप थोड़ा सा एक कदम उठा के आप देखो, बस सिंपल सी बात है, आप आसानी के साथ यू कैन इजिली कॉन्कर इट. फिर आपको एहसास होता है कि भाई मैं इतना डर रहा था यार, सिंपल सी बात है, इतना आसानी के साथ था, क्यों मैं करा, काइंड ऑफ थिंग. हाँ ऑब्वियसली, मतलब आप अपना माइंडसेट ओपन रखिए एंड बी वेरी प्रोएक्टिव इन द सेंस लाइक लेट मी डू इट, लेट मी फाइंड इट आउट. फिर देखेंगे जो मुश्किल आती है तो फिर देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई मुश्किल है आसान है. एंड आई एम टेलिंग यू, यू take an effort, you make an effort, you change your mindset, and obviously आपको जो है आसानी के साथ दिख जाता है कि जो है ये चीज मैं बेकार में डर रहा था, this is something that I can easily do. Okay, so that is one thing that I wanted to highlight, with a change in mindset, with a positive approach to the things that we are going to embrace, we are going to take, we are going to handle, we can easily do it. ठीक है. तो now that we have decided, okay, मेरा है स्किल में है, डिमांड है, मुझे चेंज करना है, मेरे दिमाग में ये सारे चीजें हैं, अब मैं इसको चेंज करने के लिए मैं ग्रोथ माइंडसेट बनाऊंगा, अपना चेंज करूंगा, अब मैं जाके चेक करूंगा, क्या करूंगा. अब जब आप जाएंगे, अब आपके पास समंदर है. क्या करना है भाई रेड टेक में, मतलब मैं आईटी में जाऊंगा तो मुझे क्या करना है. मैं एक सिंपल सी बात यहाँ पर मैं एक चीज लाके रख दिया, कौन सा लैंग्वेज सीखूं, इतने सारी चीजें हैं मुझे सीखने के लिए. तो एक मोबाइल ऐप सीखना है तो वो उतने सारे लैंग्वेजेस हैं, अब आप फ्रंट एंड सीखना है तो उतने सारे लैंग्वेजेस हैं, बैकएंड में डेटाबेस का करना है, या मतलब एक तो इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, डेटाबेस करना है तो इतने सारे करना है. मतलब मैं क्या करूं भाई, व्हाट इज दैट आई नीड टू डू. सो यू गेट drowned into like the the kind of um, choices that you need to make, right? So you don't know which one to pick, you don't know which one to do. If you do, what should I do, kind of a thing. तो समरी ये चीज है, पहले तो आप रीड करो कौन सा काम करना चाहते हो, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैव द सेम काइंड ऑफ thinking nature, kind of a thing, or an approach, kind of a thing. What I have mentioned is a completely end-to-end kind of a situation. So अगर एक आप IT फील्ड लेते हो, there is something called a front end, which is basically आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है. तो मोबाइल में मोबाइल ऐप्स है, फ्रंट एंड है, एक उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है जो बेस आपका आपका जो उसका जो क्या बोलते हैं, the heart of that application, kind of a thing, it's being handled in the web backend, and then there is a database, and there is a cloud integration, there is a hosting platform, बहुत सारी चीजें हैं आपको करना पड़ता है.
first thing is you try to आप अपने बारे में try to read and analyze मैं कौन सा काम कर सकता हूँ मैं मतलब थोड़े लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन सिंस एक पैकेज मिल जाता है आपको तो यू आर वेरी गुड एट एडमिनिस्ट्रेटिंग दैट स्टफ फॉर एग्जांपल विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन है not Windows administration, but cloud administration, basically Windows. So, those comes into separate thing. I don't want you to think on those lines, but this is purely on the programming side. Okay, Amazon Web Services है, Google Cloud Platform है. Previously, everything was on servers. Now everything is on cloud. So if you don't need to think, अगर आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा चलता नहीं है काइंड ऑफ ए थिंग, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा सीख लो तो आसानी के साथ मतलब थोड़ा हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छा डिमांड है। नहीं, आपका दिमाग चलता है एंड ऑब्वियसली आई एम सेइंग यू इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट द माइंडसेट दैट वी हैव मेड, लाइक वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू एन इंजीनियरिंग और वी हैव नॉट pursued an engineering career or something that demands me to think. I don't need to worry about it. हर कोई हर चीज में अपना दिमाग लगाता है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है और ये चीज में काम करके लगाना है। तो कोई भी चीज में आपको दिमाग लगाना है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई मार्केटिंग का जॉब हो, कोई भी काइंड ऑफ ए जॉब हो, कोई अकाउंटिंग का जॉब हो, हर जगह दिमाग लगाना पड़ता है। बट हाउ वो दिमाग कैसा लगाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, यू माइट नीड टू थिंक ऑन दोस लाइंस। इट्स जस्ट दैट लर्निंग अबाउट दैट टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग योर माइंड, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज आई वांटेड टू रीड एनालाइज व्हिच वन यू वांटेड टू डू, देन आइडेंटिफाई योर एबिलिटीज स्ट्रेंथ्स। हाँ, मैं ये चीज में कर सकता हूँ एंड ये चीज मेरी एबिलिटी है, मैं इसमें आसानी के साथ मुझे समझ में आ जाता है। आई मीन दिस समथिंग रिक्वायर्स ए लिटिल बिट। आप अपने आप को अकेले बैठ के फॉर एग्जांपल आप मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था, आके जो है बोला कि भाई मैं he was excellent, he was doing a teacher job and his communication was very excellent. And back my 2008 की बात कर रहा हूँ, 2007 or 8 की बात कर रहा हूँ। And he came saying like, I want to change in an IT field. I said, yes, you can. What do I need to do? I said, आप बोलो। तो मेरा एक दोस्त है, वो .NET में बहुत अच्छा है, मैं .NET करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ क्या? ठीक है, करो। आप क्या करना पड़ेगा? तो मैंने बोला कि ये .NET की चीजें ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप ये काम करो एंड फिर आप मुझे आके मिलो, फिर मैं बोलता हूँ कि क्या करना है उसमें। मेरे पास तो वीडियोस भी थे, अवेलेबल थे उस जमाने में। अब जो जैसे यूट्यूब में अवेलेबल हैं, उडेमी में जैसे अवेलेबल हैं, काफी सारे वीडियोस जो फ्रीली अवेलेबल हैं, उस जमाने में नहीं थे। बहुत मुश्किल से मिलते थे, तो मेरे पास कई वीडियोस थे, तो मैंने दे दिया वो बंदे को। तो खैर, किस्सा मुख्तसर ये था कि ही केम बैक आफ्टर 2 months एंड देन ही टोटली सेड आई डोंट, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इनटू माय माइंड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहला जो था अच्छा था, वो और डिप्रेशन में चले गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं हैंडल कर सकता हूँ नहीं कर सकता। मैंने बोला कि ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट दैट। एक तो आप अकेले में पढ़ रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन विदाउट एनी बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस नॉलेज, एंड आप खुद से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा, तो यू ऑब्वियसली नीड गाइडेंस। तो एक काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डेटाबेसेस में हूँ, आप मैं डेटाबेसेस में हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ। तो मैं उस वक्त में SQL सर्वर में था, आई गाइडेड हिम ऑन SQL सर्वर, बट आई टोल्ड हिम दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एंड आप ये 3 चैप्टर करके मुझे 1 महीने के बाद मिलो। एंड दैट्स हाउ आफ्टर 2 months he totally got disappointed with .NET. He came back to me again. I told him I'll guide you on a personal note. So I told him to start working on SQL Server. He learned about it, and obviously the first 1.5 month he was struggling like anything, and he was bringing a lot of questions. And because मेरा पड़ोसी भी था, मेरा कॉलोनी मेट भी था, मेरा मस्जिद मेट भी था, तो he came to me and then I told him this is how you need to read, this is not something that you need to take kind of a thing. And then he started his journey, and believe me, after 4-5 months he really picked up, he understood a lot of things, and he learned the whole textbook kind of a thing. Now after that, I'll cover the
he was really very high in you know like मैं कोई भी इंटरव्यू में कर सकता हूँ, मैं जाके आपको ये कर सकता हूँ, kind of a thing. So मैं ये काम करूँगा. I'll cover this story later. But the thing I wanted to say is, at that time there was not much of a guidance. Now we do have lot of material available on YouTube, lot of courses available on Udemy. There is also Skillshare kind of a thing, soft skill. Lot of things are available, but Udemy is one-stop solution. You can go by. Every other week they have courses, on sale. So basically, आप 400 rupees में, 300 rupees में, 500 rupees समझो अंदाजन. Every other week sale में होता है 3,000 rupees का course और like 10,000 rupees का course 500 rupees में बेचते हैं. You can sign up with your Google ID, buy that course. For example, you want to go in Java. Right now, Java बहुत demand है, Python बहुत demand है, and databases में कोई भी लो आप, कई सारे, मतलब हर चीज ऐसी नहीं है कि एक ही डिमांड है दूसरा नहीं है, काइंड ऑफ थिंग. ईच वन एक समंदर है. एक चीज याद रखने की बात है कि आप जो भी सिलेक्ट करो, एक सिलेक्ट करो, काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, राइट. You start with one. Okay, you start with one, you learn about it, you understand, whether you can do it or not, read and analyze it, and then immediately take a decision. जरूरत नहीं है कि आपको जो है, you need to आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. नो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लेट्स नॉट अंडरस्टैंड इट. आई मीन, टेक अ डिसीजन अबाउट इट. मे बी 1 week पढ़ोगे, आप समझ में आएगा, ठीक है, कंटिन्यू करो. नहीं समझ में आया तो ट्राई डिफरेंट थिंग. And one of the things, each one of the things is very good and very demanding. It's just that, like, you need to analyze what is your strengths and abilities are and choose what suits your interest. And अपने आप पे खर्च करो, मतलब take those courses. आप इनिशियल, यूट्यूब तो फ्री है, हर एक के पास फोन अवेलेबल है. आप कोई भी चीज आप एक लेके आप यूट्यूब में मारो, उसके फ्री वीडियोस अवेलेबल है. आप मतलब 2 साल पहले के वर्जन के अवेलेबल भी होंगे. जरूरत नहीं है कि जो है बहुत ड्रास्टिकली चेंज होंगे. आप इनिशियली एक नॉलेज आ जाएगा. लिसन टू द वीडियोस, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. Spend about like 2 to 3 hours listening to multiple videos from multiple people. If you see you are getting it, maybe you can go to Udemy, buy a course which is full-fledged course that is covering end-to-end topics. Like, आप उसमें फिर वहां पर बैठ के वहां कोर्स कंप्लीट कर सकते हो. You do an hands-on experience. So that is how I wanted you to analyze what is best for you. If something doesn't work out, take a decision immediately, switch it out. फॉर एग्जाम्पल, एक जावा कोई करना चाहता है, जावा बहुत डिमांड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जावा पढ़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा. नोड जेएस है, नोड जेएस इज हेवीली इन डिमांड राइट नाउ, बट जावास्क्रिप्ट इतना आसानी के साथ पल्ले नहीं पड़ता है. पाइथन बहुत आसानी के साथ, पाइथन इज मेड इन सच ए वे, लाइक, बहुत आसानी के साथ समझ में आता है. लेकिन जस्ट पाइथन नॉलेज होने की वजह से आपको जॉब नहीं मिलता है. काफी सारे पाइथन के रिलेटेड पैकेजेस हैं. वो पैकेज, फॉर एग्जांपल, डेटा साइंस का पैकेज है, कोई मैथमेटिक रिलेटेड, या मल्टीपल थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें हैं. लाइक, इफ यू स्टार्ट, Python is a base, but there are many things you can do with Python, right? So obviously आपको एक के साथ दूसरा एबिलिटी भी, मतलब उसके रिलेटेड स्किल्स भी आपको हासिल करना पड़ता है, which I'm going to cover right now. So that is something like, you need to take a decision as to what I can understand and what I cannot, and based on that take a decision and start going further. अच्छा, IT जॉब में लेना है, समझ में आ गया कौन सा चीज करना है. अब मुझे भी समझ में आ गया यहाँ पर. ये दिस गोस हैंड इन हैंड. कैसा मैं स्विच करूं, कैसा मैं अपने आप को जो है मैं चेंज करूं. से सपोज आप डिसाइड करते हो मुझे पाइथन में जाना है, या से सपोज आप डिसाइड करते हो कि मुझे जो है मैं एसक्यूएल में या सीक्वल सर्वर में जाना है, और नहीं मुझे समझ में नहीं आती, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता, मैं मेंटेनेंस में, क्लाउड इंटीग्रेशन में मैं कोई भी करना चाहता हूँ, काइंड ऑफ थिंग. लाइक, आप कोई भी जॉब पोर्टल ले लो, naukri.com है, या मल्टीपल portals out there. LinkedIn is one of the best portal right now where multiple jobs also come there.
any portal, go search for a job. फॉर एग्जाम्पल आप जावा का जॉब ढूंढना चाहते हैं या पाइथन का जॉब ढूंढना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल जावा का लेता हूँ क्योंकि मेरी टीम में काफी सारे जावा के बंदे भी हैं। कोई जावा का आप सर्च करते हैं तो यू गेट लॉट ऑफ जॉब्स। फॉर एग्जांपल आप कोई फील्ड में है, एक अकाउंटिंग फील्ड में है, 10 साल से काम कर रहे हो एंड यू वांटेड टू इमीडिएटली स्विच टू जावा, राइट? सो obviously from an IT perspective you are fresher, but from an experience perspective you're like a 10 years person experience, right? So you need to make a balance out of it, like my 10 years का experience है, मैं 2 साल का experience लगा के मैं जाता हूँ kind of a thing. So if you look at like 2 to 3 years of experience in Java, what are the things that are getting asked? हर कोई कंपनी अपना requirements publish करती है। आप एक काम करो, एक पर्टिकुलर जॉब रिलेटेड फंक्शनैलिटी का, जॉब रिलेटेड 2 to 3 years का एक जॉब में मुझे जावा में कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आप सर्च करो। सर्च करके उसका नोट डाउन, आप रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करो। मतलब ये जॉब में क्या पूछ रहा है, ये जॉब में क्या पूछ रहा है, ये जॉब में क्या पूछ रहा है। यू मेक ए लिस्ट ऑफ like 10 to 12 job searches that you made, like for the kind of experience you are looking at, like आप नोट डाउन करो। आपको once you do that effort, right, आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि most of the things are very common, like एक जॉब वाला पूछता है कि आप रेस्ट एपीआई होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड आपको ये चीज होना चाहिए। सेकंड वाला भी पूछता है कि रेस्ट एपीआई होना चाहिए, काइंड ऑफ देन looking at all the set of requirements, you get to understand there are some things which are commonly asked across jobs. So these are essential skills for Java, kind of a thing. आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि जो है हाँ ये चीज कॉमनली पूछी जा रही है, तो ये समथिंग बहुत जरूरी है कि मुझे इसमें सीखना है, ये पढ़ना ही है, तो नोट डाउन करो वो चीज, ठीक है। एंड थोड़ी चीजें होती है स्पेसिफिक जॉब में, एक पर्टिकुलर चीज पूछते हैं, भाई आप ओपन एपीएस स्पेक भी आपको आना चाहिए, करना करते हैं, और यहाँ पर नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दैट। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। So when you note down the requirements, you will understand there are some things that are commonly asked, or maybe for a particular kind of a job you're looking, आप accounting से जावा के साथ आप shift करना चाहते हो, या accounting से पाइथन के साथ कुछ shift करना चाहते हो, तो पाइथन के जब आप job requirements देखोगे, so you will understand there is a common set of requirements that are being asked, and there are some things that are asked for a particular set of a job. तो आप नोट डाउन करो, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है मैंने ये पढ़ना है, और ये समथिंग मुझे पता नहीं, याद नहीं है, मतलब मुझे ये समथिंग मुझे नोट डाउन करना है, चेक करना है, काइंड ऑफ थिंग। मेक ए नोट ऑफ इट। And there are some things that are obvious that are not needed. There are some things that you might know, you might want to find out about it. फिर आपको समझ में आएगा हाँ ये बड़ा extension of that particular skill है, कि एक high level में एक आपको जब आप you repeatedly do things for productivity purposes, these are the packages that are being offered over there. So you also need to learn about that package and then include it as part of your learning in Java or Python kind of example. तो जब आप नोट डाउन करोगे, ऑब्वियसली आपका रिज्यूमे, देखो कोई भी जॉब पोर्टल है, कोई भी लिंक है, अब फॉर एग्जांपल आई एम द हायरिंग पर्सन, मुझे एक रिक्वायरमेंट है, मेरे कंपनी में एक रिक्वायरमेंट है, ये बंदा डेटाबेस का काम करना है, ये बंदा शुड क्वेरी, ये बंदा शुड अपडेट टेबल्स, शुड हैव क्रिएट अ बैकअप काइंड ऑफ ए थिंग। तो ये मेरे एसेंशियल जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड आपका रिज्यूमे अगर वो चीजें मैच नहीं करती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, राइट? तो मेरे रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आपका स्किल्स आर नॉट मैचिंग, एंड दैट डजंट make a sense for me to go and interview you, right? So most of the things previously it was being done on a manual basis. Now the job portal does that key uh, word match, the machines will do it. ठीक है। कोई बंदा आके कोई एम्प्लॉयर आके बोलता है कि जो है आपको मुझे ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट चाहिए, एंड ही पुट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, that portal will search your resume and make a hit to your resume and then suggest your resume only if the words are matching. आप बैकअप भी करते हो, क्वेरी भी करते हो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी करते हो. These are all the things that are required by a job employer.
and those words are there in your resume also, so your resume will be suggested to that particular employer. So that's the case with a job portal. So the reason why I asked you to do that search is, one, you need to know what is being asked in that position. फिर आप अपने आप को एनालाइज करते हो कि मुझे ये चीज आती है, नहीं है, मुझे ये चीज पढ़ना है, काइंड ऑफ ए थिंग। फिर उस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आप अपना रिज्यूमे भी ट्वीक करते हो कि हाँ, मैंने ये काम किया है अकाउंटिंग में, एंड आई यूज दिस टू क्वेरी माय टेबल्स, टू बैकअप माय टेबल्स, टू परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज द क्वेरीज। जब आप ट्वीक करते हो, यहाँ पर वो पूछ रहा है क्वेरी, बैकअप एंड परफॉर्मेंस, आप उसको नोट डाउन करके आप अपना रिज्यूमे भी ट्वीक करते हो, क्वेरी, बैकअप एंड परफॉर्मेंस काइंड ऑफ ए थिंग। फिर आपको मैच होता है तो देन यू चेंज योर रिज्यूमे, यू पब्लिश योर रिज्यूमे ऑन द जॉब पोर्टल एंड काइंड ऑफ ए थिंग। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग दैट आप एक एक आधा घंटा बैठो एंड हो जाएगा काइंड ऑफ ए थिंग, राइट? So this requires time and effort, time to understand, what are the things being asked, and effort to note down and change your resume and publish it. So जब आप मेहनत करोगे तो फिर आप फल पाओगे। काफी सारे लोग जो है होता ये भी है कि जो है बैठ के रिज्यूमे चेंज करते हैं, फिर पब्लिश करते हैं, फिर उनको कॉल भी नहीं आता या कोई पूछता भी नहीं है उनके पास, मल्टीपल थिंग्स। सो ऑब्वियसली रीजन क्या होता है कि your resume is not matching to the requirements of your job portals, requirements. So there is some mismatch in there. आपका machine आपका resume recognize नहीं कर रहा है, so it's a time in it's an indication saying you go and need to change your resume, because आजकल काफी लाखों resume publish होते हैं, and आपका resume filter होके आना है तो you need to ensure कि you need to have the keywords noted down on your resume। ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। आप अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको नोट डाउन करो, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे काफी सारी चीजें पूछते हैं, वही चीजें आपको समझ में आ जाती है कि ये चीजें कंसिस्टेंटली पूछी जा रही है, वही चीज अपने 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 मतलब आप अपने आप को प्रोजेक्ट करो अपने रिज्यूमे में। सो दिस इज द job hunting and switching strategy. I hope everything is clear, right? So one, you need to change your mindset. You need to get out of yourself of doubt, fear, unknown fear, failure kind of a thing. You need to get out of your mindset, comfort zone se aana hai, be ready for for doing hard things. Change your mindset, कोई भी चीज आके तकलीफ में आती है, बहुत मुश्किल दिखती है, पेशेंस से हैंडल करो, माइंडसेट को चेंज करो। एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, नॉट मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रेश। नो, एक चीज में आप माहिर रहो, एक चीज में। काफी सारे बच्चे, काफी सारे लोग जो मिस्टेक ये करते हैं कि मल्टीपल चीजें कर लेते हैं, कोई एक चीज में भी माहिर नहीं होते। डोंट डू दैट मिस्टेक। एक चीज को पकड़ो, एक चीज में माहिर रहो एंड एक चीज पे फोकस करो। स्लोली एंड स्टडीली एक बार आप माहिर हो जाते हो, you know कि you can do things well in that particular thing, then you start learning about other things just for the sake of expanding your knowledge, but not like हाँ कोई कंपनी ये पूछ रहा है मैं ये भी कर लूंगा, वो पाइथन पूछ रहा है मैं पाइथन का थोड़ा सीख लूंगा, कोई एक्सप्रेस पूछ रहा है मैं वो कर लूंगा, कोई सीक्वल सर्वर पूछ रहा है मैं वो कर लूंगा। कहीं के नहीं रहेंगे आप। यू विल नॉट बी, आई मीन, you will end up nowhere. So concentrate on one. Once you decide what to do, which one to concentrate, make an effort, take time out, make an effort, note down what the requirements are there in the market. अब आप फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट करते हो, राइट? आप ओरिएंट डीबी सेलेक्ट करते हो, आप जाके मार्केट में देखिए, हाँ मुझे कुछ ओरिएंट डीबी समझ में आ रहा है, बहुत आसान चीज है, अच्छे दिख रही है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है, मैं कुछ अलग से करूंगा, वेल एंड फाइन। अब आप जाके सर्च करो, ओरिएंट डीबी के रिक्वायरमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर आप जॉब में फॉर एग्जांपल जावा में हो सकता है कि 2000 जॉब्स हैं, ओरिएंट डीबी में हो सकता है कि 10 जॉब ही अवेलेबल हो, तो यू इमीडिएटली नीड टू टेक अ डिसीजन। अब आपको यू अंडरस्टैंड कि मार्केट टाइट है एंड कर सकते हो तो करो,
लेकिन करना है तो you need to be very master in that particular kind of a thing. So it takes a time and effort to note down what you need to do, tweak your resume, change it, and then focus on what is the effort you need to do. Now that you have all done, these are all the things like, ऐसा नहीं है कि parallel sequentially होता है, but this is something that I'm suggesting on multiple fronts. ये जरूरी नहीं कि sequentially करना पड़े, but you can do it parallelly, without affecting your current job kind of a thing. तो strategy क्या होना चाहिए? Preparation strategy ये होना चाहिए, right? आप दिमाग में लेके चलो कि I need to take it 6 to 8 months of a preparation, okay? And once you take that preparation time, invest about 5 months on one technology, learn one technology, okay? And then 1 month आप एक mock interview रखो. Mock interview in the sense, आपको alhamdulillah, once you start investing your time and effort on a particular thing, you tend to also meet people related to that, or you consult with some other people कि मुझे क्या चीज करना है kind of a thing. Then आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा है. अल्हम्दुलिल्लाह MFIRD में आप काफी सारे ग्रुप्स में भी होंगे. That's how you are coming here, right? So आपको मिल जाएंगे, काफी सारे लोग मिल जाएंगे इंशाल्लाह. एक मॉक इंटरव्यू मुझे कराना है. Anybody can help me out. Alhamdulillah, we'll all help you out inshallah. You can put that up. But 1 month mock interview karo, not necessarily for a real person. You can also mock interview yourself, and how is that? I'll suggest you what to do. And 2 months actual interview and rejection experiences hota hai, final selection hota hai, learn and improve. Okay, I told you about one person I was talking about, right? He was a teacher, English teacher. He was earning 3,000 rupees and he was not happy because he had some responsibilities and he wanted to gain good salary. He immediately came up .NET. I said, कर लो .NET. तो वो बंदा गया, 2 महीने पढ़ा, .NET समझ में नहीं आया, वापस आ गया. फिर मैंने उसको बोला कि भाई क्या करना है? बोला नहीं, ये चीज करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा. तो he slowly started learning things, and then told him to come back to me after 3 weeks or 4 weeks के बाद आप करो, आप जो पढ़ रहे हो वो बोलो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा करना है, क्या नहीं करना, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो kind of a thing. So you tend to get monitor yourself or tend to review yourself, right? So alhamdulillah, he learned about 5 months and banda mashallah excellent preparation kara, doing that teacher job for continuously, he was doing that job. One thing for sure, don't mess up your current whatever work you're doing, don't reject that. You would need to have a strategy. What the strategy I'm talking about is you take out 1 or 2 hours per day, specific time, where you can. मैं रात का बंदा हूँ, मुझे रात में अच्छी समझ में आती है. कोई दोपहर का बंदा होता है, कोई सुबह का बंदा होता है. Depending on your nature, fix one time, take out 1 or 2 hours. आजकल तो लैपटॉप्स भी अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल है. यूज लैपटॉप बहुत चीप में मिल रहे हैं. एक लैपटॉप खरीद लो, नहीं है तो मोस्ट ऑफ यू शुड हैव इट, and buy a course, start preparing it. Okay, consistent, this needs consistent practice, right? आईटी का एक चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. नॉट नेसेसरली आप एक प्रोजेक्ट में बैठ के प्रैक्टिस करो, खुद से बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको काफी सारे एक्सपीरियंस आपको खुद से आ जाएगा. आप कई सारी चीजें खुद से सीख लोगे. एंड जो पूछता है बंदा, जो इंटरव्यू करता है, आप I'm sure you'll hit that experience while practicing, and you can easily say that, you can easily correlate to your experience. Okay, so consistent एक time बनाओ. बहुत सारे बंदे होते हैं, मैं आज स्टार्ट करूंगा 2 महीने के बाद जॉब लगाऊंगा. नो, डोंट बी दैट क्रिटिकल काइंड ऑफ ए थिंग. इतना खतरनाक प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है. आसानी के साथ, आफियत के साथ, आज के चीजें लेकर चलते हुए आपको डिस्टर्ब नहीं करना है. 6 to 8 months प्रिपरेशन बनाओ. I know you are struggling with not a good salary. Maybe you want to earn a good salary, but prepare for it, plan for it. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसने तदबीर से बेहतर कोई और चीज नहीं है.
come up with a better plan, plan betterly, focus on it, and then you'll see the results out of it. So 6 to 8 months का प्रिपरेशन बनाओ, एक टेक्नोलॉजी सीखो, कंसिस्टेंटली सीखो, रोज 1 घंटा या 2 घंटे लगाओ. फिर क्या होगा जब वो बंदा 5 महीने के बाद सीख के आया, मैं बोला कि भाई अब आप रेडी हो. एंड व्हाट आई आस्क्ड हिम इज लाइक डू वन थिंग, गूगल में जाके सर्च करो, इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करो, पूरे नोट डाउन करो. आप नोट डाउन करने के बाद आप एक काम करो, ऐनक के सामने बैठो, आप अपने आप को क्वेश्चंस लो, खाली अपने आप को क्वेश्चन पूछो. इफ यू आर नॉट टॉकिंग प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज. अपने आप को क्वेश्चन करो. ओके, स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चन एंड देन without looking at the question, without looking at the answers, just note down the questions and then ask the question yourself. So if you're sincerely prepared, like I've told you many things, like you went to the requirements, you note down the requirements, you know what is being consistently asked, you tweaked and changed your resume. Now you note down all the topics that you want to learn, you spend the time learning those topics. Right now it's the time to analyze your knowledge. How? You take all the printout of all the questions, or like maybe in your resume, or maybe in your phone, you take that mock-up, the interview questions that are being asked, sit in front of a mirror, आप अपने आप को पूछो. Alhamdulillah he did it, like and then एक बार आप क्वेश्चन पूछो, फिर उसका आंसर दो, अपने आप को दो, then you will understand. काफी सारे लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में भी वीक होते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते. And the sole reason for it is two things. One is like fear, कि पता नहीं आता, नहीं आने के टाइम पे आप obviously अपने आप को you tend to flutter yourself, right? And second thing is आपकी knowledge अच्छी है, आप कुछ ना कुछ वैसे कन्वे कर देते हो. You can easily communicate that in whatever way possible. Not necessarily you need to have a very good communication language. It's not essential, but it's obviously like needed kind of a thing. अगर आप अपने आप को improve भी करते हो communication skills, तो वो भी बेहतर है. But obviously the knowledge automatically gives you that communication ability as well. तो अब आप एक बार आप improve, अब आप देखते हो कि I'm able to answer this question. Now go and verify that answer, right? And एक बार आप आंसर दोगे, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मैं ये जवाब दे रहा हूँ, हालांकि एक्चुअली इसका आंसर इस तरीके से देना है, आपको समझ में आ जाएगा. यू ट्राई टू यू कैन बी योर ओन जज ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कि नहीं ऐसा दे रहा था मैं, इसको ऐसा देना चाहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा. तो 1 month यू डू दैट मॉक इंटरव्यू योरसेल्फ, मल्टीपल तरीके से आप क्वेश्चंस पूछो अपने आप को. You try to give that answer without looking at your knowledge, and then look at the answer and try to analyze आपने जो दिया है और जो है वो सही है नहीं है kind of a thing. जब होगा वो बंदा बहुत ही एक्चुअली प्रिपेयर्ड था, मैं जाके दूंगा. मैंने पहली चीज यही बोली कि भाई देखो, आपको अब इंटरव्यू में आप रिज्यूमे ट्वीट करके डालोगे तो कई सारे बड़े बड़े कंपनी से आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे. आपका टारगेट है अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ जाना है. सो डोंट go and actually attend that interview. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस से कॉल आ रहा है, जाके खुशी खुशी जाके अटेंड मत करो इंटरव्यू इन्फोसिस में, क्योंकि first 2 months you will actually go the interview and you will face rejections, that's for sure, because you are not experienced. आप खाली पढ़ के जा रहे हो, actual experience नहीं है, right? So you may find challenges in cracking that interview. तो छोटे छोटे कंपनीज या नाम जिसका नाम आप सुने नहीं हो, बट यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क, नहीं भी आता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता काइंड ऑफ ए थिंग, आप उस काइंड ऑफ कंपनीज के इंटरव्यू सेलेक्ट करो, उस कंपनीज पे जाके इंटरव्यू अटेंड करो. हुआ वही जो 2-3 इंटरव्यू जो पहला बंदा अटेंड करा, इतने बुरी तरीके से जो उसका इंटरव्यू गया कि ऑन द फेस जो है, जैसा बोलते हैं मुंह पे पेपर फेंक दिए काइंड ऑफ ए थिंग, ही फेस दैट फेलियर, ही वाज रिजेक्टेड. मैंने बोला कि देखो ये होगा जरूर, आपको क्या करना है, दिल पे लेना नहीं है. यू इमीडिएटली कम डाउन, ड्यूरिंग द इंटरव्यू इटसेल्फ यू कैन टेल द इंटरव्यूअर कि आई वांट टू नोट डाउन योर क्वेश्चंस बिकॉज आई वांट टू इंप्रूव ऑन माई सेल्फ. यू कैन डू दैट, लाइक सिचुएशन देख के आप उसको हैंडल करो. कई सारे इंटरव्यूज आधे घंटे से ज्यादा होते नहीं हो,
ऐसा भी होता है कि उसमें अब आप लिखने में बैठ जाओगे तो काफी सारे होगा, जरूरत नहीं है कि आप उसी टाइम पे लिखो, लेकिन दिमाग में नोट डाउन कर लो कि बंदा क्या पूछ रहा है। इमीडिएटली आपको इंटरव्यू का बाद, आप इमीडिएटली बाहर आने के बाद या इंटरव्यू होने के बाद पेपर पेन लो एंड नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये चीज थी, ये चीज पूछा, ये चीज पूछा, मुझे समझ में ही नहीं आया ये क्या चीज पूछा था, मैं कुछ की बोल दिया। एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट 1 or 2 क्वेश्चंस दैट यू टेल अबाउट, राइट, दैट नो, मैं एक बंदा हूँ, मैं अगर मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं 10 मिनट में परख सकता हूँ कि आगे वाला बंदा सही में है नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। अगर आप फेक करते हो अपने रिज्यूमे एंड फेक एक्सपीरियंस भी लगाते हो, मुझे आ जाता है, मैं समझ जाता हूँ। द ओनली वे टू डिफर दैट परसेप्शन इज यू गेन मोर नॉलेज बाय वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 3-4 जगह से बहुत बुरी तरीके से जो है रिजेक्ट करा गया। एंड 2-3 लोग तो बोल भी दिए कि तुम फेक एक्सपीरियंस लेके कर रहे हो, काइंड ऑफ थिंग। कि मैंने उसको खुला बोला कि अब नोट डाउन करो, एवरी इंटरव्यू के बाद बैठा, नोट डाउन करा, क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा। 1 महीना 1.5 महीने के बाद जो रिजेक्शंस हुए, 4-5 इंटरव्यूज रिजेक्शन हुए, ही अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। मेंटली प्रिपेयर हो गया, फिर वो क्वेश्चंस का एक एक आंसर बना लिया वो बंदा, बना लेके फिर जब अटेंड करा तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी कंपनी में सेलेक्ट हो गया। जो वो सिलेक्शन के बाद जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था, आप सोच नहीं सकते कि उसका क्या क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, राइट। एंड एंड द थिंग दैट ही डिड आफ्टर दैट इज लाइक ही अटेंडेड विप्रो, यू नो विप्रो में सेलेक्ट हो गया बंदा। एंड मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, he was earning 3,000 rupees as an English teacher. He got 25,000 offer job at that point of time. 3,000 किधर, 25,000 किधर, राइट। तो जो कॉन्फिडेंस जो था, जो खुशी उस बंदे में थी, वो बंदा बोला कि मेरा 8 महीने निकल गया रियाज भाई करना होते, जो मेहनत लगाए जो करे वो सारी चीजें निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला कि भाई अब इतना जल्दी खुशी होने की जरूरत नहीं है, you will face challenges even after going into the company and it did happen। तो बंदा गया, विप्रो में गया, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पोजीशन था, कॉन्ट्रैक्टर की तरह गया, अच्छा काम करता तो उसको हायर कर लेते थे। लेकिन अब है बंदा विदाउट एक्सपीरियंस गया, इंग्लिश तो मस्त बात करता था, अच्छा बात करता था, टेक्नोलॉजी का जो भी उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वही था, एक्चुअल एक्सपीरियंस तो नहीं था। तो he struggled a lot, you know it so happened कि एक बार आप कंपनी में जाने के बाद इट्स नॉट योर नॉलेज दैट मैटर्स, इट्स आल्सो लाइक सॉफ्ट स्किल्स। कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं कि आप कैसा कम्युनिकेट करते हो, टीम से कैसा बात करते हो, फिर आप अपने कमजोरी को कैसा आप negotiate करते हो, you how to buy time, if you fail how to project yourself, these are all the things that you need to learn। So you try, you fail, you try, you succeed, you try kind of a thing। तो वन फाइन डे मतलब बंदा कॉल करा, बोला कि जो है मेरा मेरा बॉस जो है अ, मुझे गाली दे दिया, मैं काम नहीं करे जैसे, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। ठीक है। तो क्या करूँ, तो बोला भाई कुछ भी नहीं, पैक करो बैग्स एंड यू विल बी किक्ड आउट ऑफ दैट कंपनी। आई मीन नोबडी कैन टॉलरेट फिजिकल वायलेंस। तो कुछ भी करना था, वो गाली दिया तो आप गाली से जवाब दे सकते थे, बेहतर होता था कि आप खामोश बैठ सकते थे, लेकिन आपने हाथ उठा दिया तो यू विल बी टर्मिनेटेड। हुआ वही, उसका जो 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 सुपर मैनेजर था, मैनेजर का ऊपर मैनेजर, वो बंदा बोला कि बोला भाई तुम अच्छा काम कर रहे थे, आई नो यू आर लाइक स्ट्रगलिंग, आप पहले काम करते थे, कुछ भी करते थे, आप चलता था, लेकिन आप हाथ नहीं उठाना था उस बंदे पे, थप्पड़ मार दिया उसको सबके सामने। तो बस पैक कर लेके आ गया बंदा। आप गाली देते थे, कुछ भी देते थे, मैं आपको सपोर्ट कर लेता था, लेकिन आप थप्पड़ नहीं मारना था, उसको फिजिकल नहीं जाना था। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, पॉलिसी है, इफ यू गो फिजिकल यू विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द कंपनी। ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम दैट कंपनी।
anyway, 1 month, 1.5 month में वो बंदा आ गया, निकल गया बंदा. He went to another company because he didn't had any experience in that preparation. He was struggling a lot. हर 1-2-3 दिन में कॉल आता था, रियाज भाई ये कैसा करूँ वो कैसा करूँ. So he learned a lot over the period of time. He went to Mumbai. He within 3 months, he was out of that company. And then एक कॉल आया दुबई से. He went into a Dubai. He went into a bank out there. वहां से काम करना शुरू करा. वहां सबसे ज्यादा 6 महीने काम करा. बहुत 3-4 महीने यहाँ काम करने के बाद उसको समझ में आया कि काम कैसा होता है. दुबई में गया, बहुत ही एक्साइटेड था बंदा. दुबई में गया, वहां 6 महीने काम करा. 6 महीने के बाद निकाला गया वहां से. अब ये सारी चीजें होने के बाद 1 साल में 3 कंपनी चेंज करा. लेकिन the the happy ending of that 1 year struggle was he learned 1 year experience in switching those jobs. टीम कैसा काम करती है समझ गया. टीम में कैसा डील करना है समझ गया. क्या challenges आते हैं समझ गया. कैसा डील करना है समझ गया. He struggled a lot. It was not an easy job. 3,000 काम करने पे एक दिन 25,000 पे जब काम कर रहा था, 25 से 30 पे एक बार दुबई गया तो वहां पर तो 60-70 पे आ गया बंदा. तो ऑब्वियसली लेकिन दैट काइंड ऑफ risk is something that he was willing to take and he took it. Alhamdulillah, it's not that he didn't do. He learned that experience and then finally, after 1 year, he again came back. He went into US. Now he settled with 180K kind of a job in Los Angeles. ठीक है. This one example that I have. एक another example भी था. मेरे साथ एक बच्चा था. मेरा कलीग एक बार उसका झारखंड से था बच्चा. तो ही केम. मेरा एक दोस्त है, झारखंड से है बच्चा एंड बहुत ही डिप्रेशन में है, आप उसको एक गाइड करो. ठीक है. आया बंदा. तो मतलब कंप्यूटर साइंस का बच्चा था. बी कंप्यूटर साइंस का बच्चा था. हैदराबाद आया जॉब की तलाश में. जॉब नहीं मिल सकी. कहीं अकाउंटेंट का जॉब कर रहा था एंड ही वाज अर्निंग लाइक 2 to 3,000 which is मतलब उसके जो रोजाना के खर्चे होते हैं उसके निकल जा रहे थे. बट घर से ज्यादा प्रेशर था बच्चे का. तो कब नौकरी करोगे, कब हमारे को भेजोगे काइंड ऑफ थिंग. एंड ही वाज नॉट एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू एंड ही वाज सो डिप्रेस्ड कि सुसाइडल थॉट्स आना शुरू कर रहे थे बच्चे को. तो आई टोल्ड हिम नो नीड टू थिंक अबाउट इट. आप हो ऑलरेडी फ्रॉम ए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. यू जस्ट नीड टू अब वो बंदे का प्रॉब्लम यही था कि जहां जॉब जाता था वो चीज का सीख लेके जाता था. ही वाज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस वन लर्न वन टेक्नोलॉजी. मैंने बोला कि भाई आप सब चीज छोड़ दो. आप जहां पर अकाउंटिंग का जॉब 2-3 घंटे काम कर रहे हो रात में, वहां पर करो. वहां 2 घंटे नहीं 8 घंटे बैठ के काम करो. आपको कंप्यूटर मिल रहा है. एक्सपीरियंस वहां पर आपको फ्रीली मिल जाएगा. आप परमिशन लेके आप अपना सीख लो वहां से. तो बंदा 8 घंटे बैठा, 3-4 घंटे लगाता था, जॉब भी करता था, सीखता भी था. लेकिन एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो बोला मैंने. ही लर्नड अबाउट वन थिंग्स बिकॉज ही वाज ऑलरेडी फ्रॉम ए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. ही डिडंट नीड मच प्रिपरेशन. Within 3 to 4 months he got ready. Alhamdulillah, same strategy. एक टेक्नोलॉजी जो वो बंदा बोला कि मुझे सैप समझ में आता है, तो सैप उसने कॉन्सेंट्रेट किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह साथ में भी कई सारे मॉड्यूल्स हैं. ही लर्नड अबाउट वन मॉड्यूल. जो जो मॉड्यूल में है सब चीज सीखो. सब चीज का एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो. अकाउंटिंग तो आप जॉब कर रहे हो, आपका जो दाना पानी चलता है वो आप चलाओ. घर में से जो भी आपको फीडबैक मिलता है, डांटते हैं, उसको दिल पे मत लो. आपको गारंटीड जॉब मिलेगी. 5-6 महीने एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो. अल्हम्दुलिल्लाह he concentrated on one thing. He noted down all the topics of related to that SAP module, and then he worked hands on that computer that he had. And then slowly and steadily he started attending these mock interviews. And then finally alhamdulillah UAE में job मिली उस बंदे को. Sorry, Bahrain में, I suppose. He got into Bahrain. He went there. He got a job. Alhamdulillah, he got a very good job. But that happened after he focused his efforts on one thing, consistent effort.
रोजाना 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, सब चीजें नोट करना है, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें क्वेश्चंस आती हैं वो नोट करके अपने आप को प्रिपेयर करना है, एंड देन यू ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ, लाइक आप एक होता है तो यू यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ. तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी गुड. दिस इज वन वन many um, many people like kind of a thing. तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं. प्रॉब्लम क्या होता है कि दे डोंट डू कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, एंड इफ दे डू प्रिपरेशन, दे डू प्रिपरेशन ऑन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, and then they don't prepare for the actual scenario, which is basically have put down all the strategies. ठीक है. तो you take that time, I mean depending on the nature of your job, existing job, क्योंकि आपके घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, और कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, निकला हुआ है, कॉलेज से निकला हुआ है, जॉब नहीं मिल रहे, करना है. जरूरत नहीं है कि जो है आप बैठ के स्ट्रगल करो. मल्टीपल ऑप्शंस है. आप जाओ, एक इंस्टीट्यूट में जाओ, जाके पढ़ो. जैसा आप खर्च करते हो, गाड़ी पे खर्च करते हो, पेट्रोल पे खर्च करते हो, खाना पानी पे खर्च करते हो, अपने पढ़ाई पे खर्च करो, अपनी प्रिपरेशन पे खर्च करो. कोई इंस्टीट्यूट में जाओ, पैसे दो. यूडेमी में जाओ, नहीं आप पे नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आपको स्ट्रांग डिमांड है. इंस्टीट्यूट में जाने से होता क्या है कि यू tend to sit with people and then you learn from other people. ये भी होता है. नहीं कर सकते आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, आप इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, उडेमी लो, लेकिन एक कंसिस्टेंट प्लान बनाओ. एक टाइम निकालना है, और 2 घंटे रोजाना, 1 घंटा. जरूरत नहीं कि आप 2 घंटे निकालो, बेहतर है आप निकालो, बेहतर है. 2 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं. कभी आप ऑब्जर्व करो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप गए, व्हाट्सएप पे जाओ, यूट्यूब खोलो, टाइम नोट डाउन करो, और वापस आने के बाद टाइम देखो, 1.5 घंटा तो आप ऐसे ही यूट्यूब पे स्पेंड करते हो. यूट्यूब एंड व्हाट्सएप काइंड ऑफ ए थिंग. Cut down all this extra things, like make a very strict plans, like cutting down on this extra things that you are working. फिर आप कंसिस्टेंट प्लान बनाओ, मॉक इंटरव्यू रखो, फिर एक्चुअल इंटरव्यूज फेस करो. जो कंपनीज में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वो कंपनीज में जाके इंटरव्यू अटेंड करो, फिर नोट डाउन करो स्ट्रैटेजीज क्या क्या पूछते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह यू विल गेट इट, नॉट एन इश्यू. एक हम एक और एक बंदे थे, व्हाट ही डिड इज लाइक ही वांटेड टू सेम ऐसी चीज से, कोई कोई मेरे कोई एक बंदे के पास गया, वो बोला वीबी अच्छा आप कर लो, कोई बंदा बोला डॉट नेट अच्छा कर लो, कोई बोला सीक्वल सर्वर अच्छा है वो कर लो, और वो कहीं का नहीं रहा. जो फाइनली जब लाइक ही डिसाइडेड आई वांट टू डू वन, एक इतना जबरदस्त अब वो इंस्टीट्यूट में गया. मैं बैक 2007 की बात कर रहा हूँ, अभी तो काफी चेंजेस आ चुके हैं. तो है, what he did is like the place where he learned one particular technology, that person who was teaching him, he got a job and he went. अब वो बंदे के बाद जो सीखा, जो ये बंदा सीखा, he became a teacher of it. ठीक है. वो बंदा सिखा रहा था दूसरे बच्चों को. सिखाते सिखाते इतना उसका माहिर हो गया कि ही फेल्ट दैट कॉन्फिडेंस कि मैं जाके कर सकता हूँ. तो ऑब्वियसली फेक रेज्यूमे रखा, टीसीएस में जाके इंटरव्यू अटेंड करा बंदा. एंड इत्तेफाक से क्या हुआ, वो बंदा जो जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, वो प्रोजेक्ट का मैनेजर ही जो है उसका इंटरव्यू ले रहा था. अब ये बंदे की हैबत शुरू हो गई कि जो है, तू कहाँ से काम कर रहा था? मैं वो पुणे से काम कर रहा था. कैसा काम कर रहा था? मैं कभी देखा नहीं ना तेरे को, मैं प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ. लेकिन ही वॉज सो गुड यू नो टीचिंग अदर्स द सेम टेक्नोलॉजी. ही बिकेम सो गुड कि इंटरव्यू का तो क्लियर था, मतलब ही ऑब्वियसली क्लियर दैट इंटरव्यू. फाइनली जब वो मैनेजर डाउट्स क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहा था, ये बंदा खुला बोल दिया, सर if you don't mind, let me tell you, it's all my fake experience. I know, I just learned it. So he became very happy. हाँ ठीक है, नो इश्यूज. दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि मेरे प्रोजेक्ट में काम करते हुए कभी व्हाई डिड आई इंटरैक्ट विद यू काइंड ऑफ थिंग. तो एनीवे ही गेव दैट लीवे, एंड देन ही सेलेक्टेड दैट पर्सन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही गेट इनटू इट. ठीक है. सो इट्स वेरी सिंपल. प्रिपरेशन का टाइम बनाओ, कंसिस्टेंट आप मंथ रखो, मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाओ, actual interview rejection face karo, and then slowly improve it. And before that, make an effort as to what you want to do kind of a thing. And alhamdulillah, doing this, it's very easy. You can easily switch. And एक दो नहीं, कई सारे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं. लेकिन एक प्लान के साथ प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो काफी सारा
failures face karte hain, that's the reason, I don't want you to focus on one thing. Slowly and steadily do. Inshallah, you'll get it. Even if face hiccups, no need to worry about it. Slowly and steadily. आप resume consistently change करते रहो, update करते रहो, requirements note करते रहो, and then you start preparing based on that requirement, inshallah. But prepare a long-term plan. ये short-term plan नहीं होता है कि मैं बॉडी बनाऊंगा तो मुझे 2 हफ्ते में काम कर लूंगा, मेरी बॉडी बन जाएगी. नहीं, आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, फिर एक साल के बाद आपकी बॉडी बनती है. सिमिलरली आपके स्किल्स जो बनते हैं 20-25 मिनट आप रोजाना लगाओगे तो फिर आपका 1 महीने के बाद आपको नजर आएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मल्टीपल चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू लर्न इन वन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल पाइथन है, आप सीखना चाहते हो, 1 चैप्टर आप सब कर लोगे, 2 चैप्टर कर लोगे, 3 चैप्टर कर लोगे, 10 चैप्टर भी कर लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा. 15-20 चैप्टर करने के बाद फिर आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं. फिर आप इन सारी चीजों को इंटरलिंक करते हुए ये चीज काम कर सकते हो, काइंड ऑफ थिंग. सो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, परसिवरेंस. आप बैठ के पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, लास्ट टाइम आई हैड मेनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. वन ऑफ द क्वेश्चंस आई वाज आस्क्ड इज लाइक मैं पर्टिकुलर फील्ड से हूँ, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फील्ड से हूँ, मुझे अकाउंटिंग फील्ड में जाना है तो मुझे क्या करना है. ये हमारा जो टॉपिक है, मैंने जो बोला, स्पेसिफिकली अबाउट लाइक completely switching your career out to an IT field. The kind of question I was asked last time was like, मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में हूँ, उसमें IT के स्किल्स हासिल कर सकता हूँ क्या? Yes, you can do it. But what you can do it, you need to find out for that particular technology, what are the things are there, and then you are consistent, you are improving on your current skills. Basically, जो है आप अपने skills को improve करते हो, and then you learn those technologies. That also investment of time and effort that needs to be done. But here specifically, my thing that I'm covering right now, what I covered right now, is basically about how to switch into an IT career and what is the preparation you need to make. Okay. I think I'm done. I have covered most of the things. Hope it's useful. If you have any questions, please ask me now. But we got few questions in the chat box. जी. Assalamu alaikum, Riyaz bhai. Walaikum salam. जी. This is Farooq. Riyaz bhai, first of all, I would like to thank you very much for taking जी. us to brief. So I have the quick couple of questions. One is जी. about myself. So currently I'm working in non-IT domain from जी. past 12 years. जी. So definitely I will do all the hard works and the kind of insights that you have given. जी. जी. So what I would like to know more about is, currently I'm into manager role. Yeah. So how it is going to work for me if I switch into IT domain? So should I prepare myself towards any role level of skills that I should prepare, or general and beginner level or intermediate level? So how should I prepare myself to, if I want to switch into IT domain? That is my question number one. And the question number two is, so a couple of my friends are talking most about the Python, and the other one is Snowflake. So which one would be the most suitable for any non-IT experienced person? जी. First question मैं answer करता हूँ. You are already with 12 years of experience and you are into a manager kind of a role. So you understand the aspects of a team management, team role, team responsibilities, communications, collaboration, kind of a thing. So that is something you can easily handle, right? But the kind of technology you want to switch, the multiple things, as I said, right? Obviously कोई आप shift करते हो तो without base knowledge आपको shift करना भी मुनासिब नहीं है, and it's much harder for you because you have went so much ahead in your current role. Now you wanted to come back, and that obviously will be a challenge from your mind perspective. तो बेहतर है आप कोई एक चीज टेक्नोलॉजी चेंज कर लीजिए, उसको आप ग्राउंड लेवल से पढ़ना शुरू करिए, बिकॉज if you change a role into IT, I'm sure at some point of time, immediately,
you will land up in some managerial role or a tech lead kind of a role. Okay, and you will be more on the guiding side and on a doing side. So to be guiding, you need to have some hands-on skills as well. Okay, so start learning from scratch and get to learn things because आपको एक IT का field आएगा. What are the things that are kind of a thing? फिर आप गूगल में सर्च भी करते रहो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस के जो क्वेश्चंस आते हैं काइंड ऑफ ए थिंग. वहां पर आप सर्च करो. आप बट आई सजेस्ट यू डू हैंड्स ऑन. That will give you a feel of like what an IT field is, and then managerial aspect तो आप already कर रहे हैं. You can easily translate those skills to an IT job. That's for good, no issues inshallah. So whatever you choose, you can do it. The second question is Python or Snowflake. Python is different thing, Snowflake is different thing. Snowflake is a database, Python is a language, right? दो भी अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. स्नोफ्लेक आप करो, बहुत आसानी के साथ आप सीख सकते हो, एंड ये डेटाबेस है. एंड पाइथन कम्स लेटर बिकॉज अब एक डेटा का आपको एक बार फील आ जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनिपुलेट, अंडरस्टैंड डेटा काइंड ऑफ ए थिंग. स्नोफ्लेक अभी क्या है कि पहले क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग वाज अ very costly concept for a company. Now with introduction of Snowflake, data warehousing in cloud has come, and that has become very cheap for any company to adopt. So now the demand for Snowflake has tremendously improved. But only thing is you need to gain that experience, and Snowflake is SQL. So आप locally आप SQL server install कर लेते हो अपने कंप्यूटर पे. SQL server का experience आप लाते हो, अपने आप को सीख लेते हो, तो you can easily switch over to Snowflake. Snowflake and SQL Server बहुत सेम है, लैंग्वेज सेम है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्ट सेम है. तो SQL Server आप सीख लेते हो तो Snowflake भी आप कर सकते हो. तो Snowflake करो, Python आप बाद में भी कर सकते हो आसानी के साथ. आप यू कैन वंस यू लर्न अबाउट Snowflake, राइट, Python एक 6-7 months के बाद आप आराम से उसको सीख भी सकते हो. That's for sure. Sure. Thank you so much. ठीक है, नो प्रॉब्लम. वालेकुम सलाम. जी 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 बोलिए सर. मेरा कैसा है बोला तो मैं 2013 में बीटेक ज्वाइन किया था इलेक्ट्रिकल जी. फ्रॉम नियर बाय हैदराबाद में तेलंगाना, बट आई क्लियर्ड इन 2021. So one person suggested me to go for cloud. Like in IT we have many domains, but in cloud you don't need more programming, and in IT there are more jobs compared to जी electrical. So जी how can I proceed, sir? Like I have joined a course also related to cloud native. जी जी. क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है. ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से आप आराम से कर सकते हो. आप कहाँ से, हैदराबाद से हो, बैंगलोर से हो, कहाँ से हो? सर निजामाबाद से. निजामाबाद से. ओके. बट आई सजेस्ट लाइक आप कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके आप ये करो, बिकॉज देयर टू मल्टीपल थिंग्स. हाँ सर. आप इलेक्ट्रिकल के बाद कोई जॉब करे आप? नहीं सर, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एज ए हाँ, फ्रेशर ही. अब बेहतर है आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेके. इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे आप तो आपको वहाँ पर जो ये डेली एक्सपीरियंसेस का सजेशन भी मिलता रहेगा, एंड यू कैन इजिली स्विच इट ओवर. एट द सेम टाइम आप उडेमी से कोई कोर्स भी खरीद लो, वो कोर्स भी देखो. बेहतर है आप पहले यूट्यूब में देखो कौन सा चीज़ आपको समझ में आती है, यूट्यूब के वीडियोस देखो. एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो. इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से क्या होता है कि आप एक सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन मोड में आते हो कि एक टाइम में जाना है, बैठना है, पढ़ना है. एंड पढ़ने में आपको कंपनी भी मिलती है, आप अकेले नहीं होते हो. एंड वी आर सोशल एनिमल्स, राइट? आई मीन वी टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनी, वी आर सिटिंग विद ईच अदर. सो उससे क्या होता है कि आप इंस्टीट्यूट में बैठने से आपको एक सपोर्ट भी मिलता है, फिर आप अपना ओपनली एक्सप्रेस करते हो. बट डू make it a point to yourself. I started, yes sir, I have joined a course, started learning. मैं क्लाउड भी सीखा हूँ, उसमें AWS सीखा है, डेटाबेस. पहले जावा सीखा के फिर क्लाउड, फिर AWS, फिर डेटाबेस, फिर
माइक्रो सर्विसेज पे डिप्लॉयमेंट, मगर जब हाँ। लिंक्डइन पे एज ए फ्रेशर नौकरी पे या कोई अदर प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे तो रिस्पांस फ्रॉम रिक्रूटर्स नहीं आ रहा है, कोई नहीं इंटरव्यू आते आपको। आप 5 चीजें बोले मुझे 2 सेकंड में। माइक्रो अज्योर बोले, माइक्रो सर्विसेज बोले, डेटाबेस बोले, और एक क्या क्यों बोले आप बीच में? जावा 5। जावा हाँ, एडब्ल्यूएस जावा है, हाँ, एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस जावा, डेटाबेस है। माइक्रो सर्विसेज। एक एक फील्ड लेंगे तो एक एक समंदर है। हाँ सर। आप 5 भी डालोगे तो कोई भी नहीं आएगा आपको। मैं इसलिए बोला कि ना, आपको कंसंट्रेट करना है एक टेक्नोलॉजी पे। जावा पे करना है तो जावा पे करो, क्लाउड पे करना है तो एडब्ल्यूएस पे, क्लाउड पे करो बस। हाँ सर करेक्ट। माइक्रो सर्विसेज मत करो, जावा छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक चीज करो। आप 5 चीज बोले, पांचों अलग अलग फील्ड हैं जो माहिरीन बैठे हुए हैं। अब आप जाके एडब्ल्यूएस के बुक्स देखो, एडब्ल्यूएस के बुक्स मिलेंगे। माइक्रो सर्विसेज के बुक्स देखो, माइक्रो सर्विसेज के अलग से बुक्स मिलेंगे। आप 5 भी डालोगे, आप फ्रेशर हैं, आपको हिट नहीं आएगा। हाँ सर करेक्ट। यही तो मिस्टेक करते हैं काफी सारे बच्चे। मैंने यही बोला है कि एक चीज पे कंसंट्रेट करो, एक चीज का माहिर बनो, एक चीज का जो है रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करो, उस पे फिर अपना रिज्यूमे बना के डालो। इतने सारी चीजें डालेंगे एंड मुझे देखने वाले को समझ में आएगा भाई ये बंदा फ्रेशर है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऑब्वियसली फेक है, बोल के समझ में आ जाएगा। हो सकता है जेन्युइनली आप प्रिपेयर करे हो, बट इट डजंट रिजोनेट विद द एक्सपीरियंस। समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। लिंक्डइन पे आपसे कनेक्टेड अस्सलाम वालेकुम। हुए तो आपसे कुछ भी फर्दर डाउट्स जी क्लियर। जी जी, आप डाउट्स मुझे पूछ लीजिए जी। ओके सर जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। जी मेरा क्वेश्चन है कि मैं हाँ एक नॉन आईटी फील्ड से अराउंड 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। जी। तो सडनली मैं अपने ये को चेंज किया, बीपीएस फील्ड को। तो हाँ मुझे आईटी फील्ड में एज ए टेस्टिंग का रोल मिल गया। अब मैं जी वहाँ लास्ट पैंडेमिक के टाइम से कर रहा हूँ, जी। अराउंड 2 to 3 years। ओके। हाँ बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया हूँ, मैनुअल टेस्टिंग का है वो। तो हाँ मुझे अब आईटी फील्ड में मैं आ जंप तो कर गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो मैं हाँ ऐसा हाँ। क्या करूँ अभी एज ए टेस्टिंग इन्वायरमेंट में रह के, या फिर टेक्नोलॉजी को लर्न करूँ? आप काइंडली कुछ गाइड करें और सजेस्ट करें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो डिफिकल्ट स्टेप है वो हासिल तो कर लिए, राइट। अब आप आईटी फील्ड में आ गए। नाउ अब आप जो फील्ड में है वो फील्ड के एक्सपर्ट बनो, ठीक है। जो टेस्टिंग फील्ड मैनुअल टेस्टिंग के है, मैनुअल टेस्टिंग के बारे में आप जाके कोर्सेज ढूंढो एंड वो कोर्सेस पढ़ो आप। टेक्स्ट बुक्स भी मिलते हैं, बुक्स भी मिलते हैं मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, ऑटोमेटेड टेस्टिंग के बारे में। आप एक फील्ड चूज कर लिए हो, उस फील्ड के एक्सपर्ट बनो, आप उस फील्ड के बुक्स पढ़ो, उस फील्ड के एक्सपीरियंस। अब आप वहां से फिर चेंज करने की सोचो मत, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट जंप, राइट। नाउ यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो, ऑटोमेटेड टेस्टिंग की तरफ जाओ, ठीक है। जी ऑटोमेटेड जी टेस्टिंग से पहले आप मैनुअल टेस्टिंग में इतने माहिर बनो कि यू यू बिकम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रोजेक्ट और फॉर योर कंपनी काइंड ऑफ ए थिंग, ठीक है। ये बंदा टेस्ट करता है तो बहुत अच्छा टेस्ट करता है। 2 चीजें टेस्ट होती हैं, एक एस्थेटिक्स टेस्ट होता है और एक फंक्शनल टेस्टिंग होती है। एस्थेटिक्स टेस्ट मतलब आप पेज टेस्ट करते हो, बटन यहाँ से जो है बड़ा है, इसका टेक्स्ट इतना बड़ा है, ये सारी चीजें बेकार की टेस्टिंग है, राइट। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है कि भाई ये चीज अगर मैं बटन पुश करता हूँ तो बाहर जाके वहां पर मुझे एक एसएमएस आना है, और एसएमएस आना है तो मुझे क्या चीज करना है, तो ये फंक्शनल टेस्टिंग होती है। तो जी आपको क्या करना है, बिजनेस नॉलेज का एक्सपर्ट बनना है एंड बिजनेस नॉलेज के लेवल की टेस्टिंग करना है, ठीक है। जी तो आप अपने फील्ड पे कंसंट्रेट करो, उसके माहिरीन बनो, फिर मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेटेड टेस्टिंग की तरफ आप आओ। बट दैट इज जर्नी दैट यू कैन टेक इट स्लोली एंड स्टेडीली, ठीक है जी जी। जी। या कोई टेक्नोलॉजी लर्न करना इस पीरियड में कैसा रहेगा? क्यों आप चांस लेते हो? बोला आप ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह यू आर इन एन आईटी फील्ड, बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड एंड यू विल लर्न इट इंशाल्लाह। जब आप मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के टेस्टिंग की तरफ आओगे तो आपको ऑटोमेटिकली वन ऑफ द लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा, इधर जावा या पाइथन सीखना पड़ेगा। उस वक्त आप ऑटोमेटिकली लैंग्वेज सीख सकते हैं। एक बार लैंग्वेज सीख लिए
टेस्टिंग आपकी डोमेन है, टेस्टिंग में आप उसके साथ यूज कर सकते हो, तो फिर स्विच भी कर सकते हो। उस वक्त आप सजेस्ट करो, आप बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया। ठीक है जी। एनीबडी एल्स? अस्सलामुअलैकुम रियाज भाई। वालेकुम सलाम। एक एक 1 minute, Muzammil, how do change from accounting to cyber security field? You asked this question. Muzammil, cyber security is a very vast field. आप अकाउंटिंग से साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखो। अकाउंटिंग रिलेटेड एनी पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी छानने से तो उस रिलेटेड की चीज आप चेक करना है तो करो, बट साइबर सिक्योरिटी इज ए वेरी वास्ट फील्ड। विदाउट हैविंग डोमेन एक्सपर्टीज, सिक्योरिटी फील्ड में आना इज वेरी चैलेंजिंग हो जाएगा एंड काफी सारी चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। तो यू नो start learning about security. If you feel you can do it, but otherwise I will not suggest you to do it, inshallah. ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, बहुत सारे हैं उसमें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, वेब सिक्योरिटी है, एपीए सिक्योरिटी है, दुनिया के सिक्योरिटीज काफी सारी चीजें हैं। एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड वो एक चीज कौन सी है? आप अपने अकाउंटिंग रिलेटेड है तो कुछ है तो चेक कर लीजिए, अगर आप समझ में आता है तो परस्यू करिए, नहीं समझ में आया तो कोई दूसरा फील्ड अकाउंटिंग रिलेटेड, जैसा पाइथन आप पढ़ लिए, पाइथन के अकाउंटिंग रिलेटेड पैकेजेस में आप एक माहिरीन हासिल कर लिए तो डेटा साइंस की तरफ भी आप जा सकते हैं उस तरीके से। ठीक है जी। somebody else? अस्सलामुअलैकुम रियाज भाई। वालेकुम सलाम जी। रियाज भाई मैं सेल्स की फील्ड से था रियाज भाई, एग्जीक्यूटिव जी इन गारमेंट शॉप। हम्म, Recently, I have learned Microsoft Power BI with SQL Server. जी अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah. हम्म, As a fresher, I'm not getting any calls from that. They are asking for experiences. ऑब्वियसली पूछेंगे, राइट? Yeah. आई मीन ये चैलेंज होता है एक्सपीरियंस डालना, एक्सपीरियंस करना। तो जी फेक एक्सपीरियंस डालिए, कुछ भी नहीं जी कर सकते। आई मीन जब तक आप फेक एक्सपीरियंस नहीं डाले, आप पावर बीआई का सीक्वल सर्वर का रेज्यूमेस ढूंढिए जी गूगल में, काफी सारे आपको रेज्यूमे मिलेंगे। उस रेज्यूमेस को पढ़ो, वो प्रोजेक्ट जो काम करे वो देखो, फिर आप अंडरस्टैंड करो, उसकी एक स्टोरी बनाओ, उस स्टोरी जी बना के फिर आप एक करो। नाउ आप पावर बीए सीख चुके हैं, फॉर एग्जांपल एक पावर बीए का कोर्स आप उडेमी से ले लो। वहां पर क्या करते हैं, वो कोर्स समझाते हुए उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देते हैं, तो वो जी प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप एक स्टोरी बनाओ। स्टोरी बना जी के अपने रिज्यूमे में एक्सपीरियंस डालो कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कैश बेसिस पे काम करता हूँ, मुझे नहीं मिलेगा काइंड ऑफ ए थिंग। ठीक है, जी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप मेरा नॉलेज पे एक्सपीरियंस करो, मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होगा बोल के बोलो। फिर आप, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो जी एंड यू टेल के मैं सेल्स जॉब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये वाला सेकंड थिंग मेरी, मैं सीखते हुए मैं स्विच ओवर करने के लिए, मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए मैं सपोर्ट कर रहा था। आई विल नॉट गेट एनी एक्सपीरियंस बट आई कैन गिव यू ए रेफरेंस, आप किसी से बात करा के कराओ, बोल के कराओ, इंशाल्लाह हो जाएगा। but that is जी a challenge that you need to face it, but you need to have a resonating story, कुछ बनाना पड़ेगा आपको। ठीक जी। है, As a तो fresher, we don't get jobs in this field, sir. नहीं, कोई भी हो फ्रेशर पे मिलना मुश्किल है। 2 साल का एक्सपीरियंस डालो, जरूरत नहीं है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही है। आप बोलो कि मैं 2 घंटे काम कर रहा था, 1 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का है, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस के क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चंस का प्रिपेयर करो। यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया। फिर आप हाँ, प्रोजेक्ट करोगे तो अब आपका एक्सपीरियंस, आप कोई बात करेगा, अब जैसा मैं आपसे बात करूंगा, फिर अब मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई, एक बंदा 1 साल का तो दिख रहा है, कंडा फिर समझ में आ जाएगा। तो उस जी लेवल का नॉलेज हासिल करो पावर बी एंड सीक्वल सर्वर पे। ठीक जी। है, हेलो उसके फिर ये अस्सलाम लिए वालेकुम। हाँ बैकग्राउंड जी, वेरिफिकेशन को कैसे हैंडल खुला करते हैं? बोलो, खुला बोलो। मैं जो काम कर रहा था वो कैश बेसिस पे काम कर रहा था जी एंड हो सकता है मुझे ना मिले। आप मेरा एक्सपीरियंस वेरीफाई करो थ्रू इंटरव्यू एंड दिस इज समथिंग आई कैन गिव रेफरेंस बट आई कैन नॉट गारंटी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बोल के खुला बोल दो। देयर इज जी नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर जी वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है तो वो जो बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर आपको हायर करने वाला है, ही जी विल डू समथिंग फॉर यू बिकॉज ही विल आल्सो गेट
some commission out of your selection, right? So he will suggest Yeah. some things, but otherwise from your side be very open, no issues. Okay. 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 जी Thank you. Assalamualaikum. वालेकुम Assalamualaikum. सलाम एक जी जी बोलिए Thank you for your this meeting. This is very important meeting for us for our जी career guidance. जी I'm from Bangalore. I जी know I completed my BCom and I'm working in a IT company. It's like accounts and finance role. जी Almost completed 14 years in the same company. So I want to switch for other company. So is it good to switch for other company or any other idea? Do you have any suggestion you have for me? other company in same field or other company in IT field? I didn't Same field because आप अकाउंटिंग में हो बोले, राइट? जी जी हाँ, क्या 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 प्रॉब्लम हो रही है आपको स्विच करने में? just for career and growth because same company I'm not getting so much financial increment also जी 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 career ladders to move upper नहीं, ladders. 14 साल आप एक साल में काम करे तो यू ऑब्वियसली यू हैव समथिंग, नाउ यू हैव कम इनटू कंफर्ट जोन डेफिनेटली, ठीक है? तो यू आपको जो दिमाग में है मैं दूसरे कंपनी में जाऊंगा, मैं सेट होऊंगा नहीं होऊंगा काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज आपको सता रही है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, आई टोल्ड अबाउट कंफर्ट जोन, ठीक है? तो सी जनरली मेरा एक कलीग है, वो बंदा क्या करता है मालूम है? हर साल जो है अपना रिज्यूमे अपडेट करता है, रिज्यूमे पब्लिश करता है, जाके कंपनी के इंटरव्यूज अटेंड करता है, ऑफर्स लेता है, he doesn't join, ठीक है? The reason is, he wants to ensure कि कल मेरी कंपनी से जॉब निकल जाती है तो मैं आज मार्केट में जाके मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, काइंड ऑफ सिचुएशन वो बंदे का है. So he gets selected into other companies, but he doesn't join. The reason he doesn't join is he's happy with the current company, right? But the reason he's doing the interviews is he wants to ensure कि मैं employable हूँ नहीं हूँ. आज मार्केट में मैं जाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन होता है नहीं है, काइंड ऑफ ए थिंग. ही इज डूइंग एनालिसिस ऑन हिमसेल्फ, ठीक है? तो आप भी अपना काम करो. आज आप 14 साल का एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर फील्ड, अकाउंटिंग फील्ड में है, उसका रिज्यूमे बनाओ, पब्लिश करो एंड एंश्योर कि आपको कॉल्स आते हैं नहीं आते हैं तो आपका रिज्यूमे मैच नहीं हो रहा है का मतलब, राइट? तो उस लिहाज से आप अपना रिज्यूमे चेंज करो. एंड इफ यू फॉर सम रीजन आप नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल सर्विसेज लो, रिज्यूमे राइटर्स मिलते हैं एंड प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं, उनसे बात करो. कोई 10,000 चार्ज करता है, कोई 15,000 चार्ज करता है, तो आप उनसे सर्विसेज लो एंड आप अपना रिज्यूमे अपडेट करो, लिंक्डइन अपडेट करो, काइंड ऑफ थिंग. फिर आप देखो, अटेंड भी करो. एक चीज आपके पास डरने की बात नहीं है कि आपके पास करंट जॉब है तो आप रिज्यूमे, आप इंटरव्यू फेल भी हो जाते हो तो आपको डरने की बात नहीं है, राइट? तो लेकिन आप सीखते हो कि मैं क्यों फेल हो गया, क्या आप सीखते हो, वो नोट डाउन करो, फिर आप सेकंड इंटरव्यू लो, ठीक है? तो बट व्हेन यू गो फॉर ए प्रिपरेशन, डोंट गो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग आउट. आप में और एक फ्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए. जब आप जाओगे तो यू नीड टू एमिट दैट 14 years ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम योर टॉक एंड फ्रॉम योर वॉक एंड फ्रॉम योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? तो उस लेवल का प्रिपरेशन करो. आपको ज्यादा 6 महीने की जरूरत भी नहीं है. आप एक महीना बैठ के प्रिपरेशन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा. एक स्टोरी पॉइंट बनाओ, अपने 14 साल का स्टोरी पॉइंट बनाओ, फिर आप पब्लिश करो, फिर आप जाओ, अटेंड करो, इंटरव्यूज अटेंड करो. सेलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं सेलेक्ट हुआ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर बैड एक्सपीरियंसेस. मेक ए नोट ऑफ इट एंड देन यू अगेन गो फॉर सिलेक्शन, गो फॉर अनदर इंटरव्यूज, ठीक है? बट डेफिनेटली आप कंफर्ट जोन में आ गए हो, you need to break that down, ठीक है? The only way is prepare your story, prepare your resume, prepare for the interview. Before going for the interview, see what is that they are asking in that kind of an experience. फिर उस लेवल से आप प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. myself इमरान. जी बोलिए इमरान जी सर, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए. बहुत बहुत थैंक दिस काइंड ऑफ अरेंजिंग दिस काइंड ऑफ मीटिंग. ओके जी. सो शॉर्टकटली, आप जरा वक्त कम है आपके पास, शॉर्टकट बात कर. एक्चुअली 2010 आई एम पास आउट, कॉमर्स ग्रेजुएट. आपके बाद उसके बाद 4 साल में कंपनी काम जॉब किया, SQL एप्लीकेशन सपोर्ट एंड प्रोडक्शन सपोर्ट एज टेक्नोलॉजी SQL सर्वर का. जी. उसके बाद
एक 2 साल 3 साल एक बैंक में आई वाज वर्किंग एज इन बैंक जी दैट टाइम आई वाज उसमें भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ना सीक्वल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर एक जी रोल था एक थोड़ा जूनियर लेवल पर रोल था उसके बाद सर आई वांट टू अपग्रेड मैं थोड़ा अपग्रेड होना चाहा उसके बाद 2017 में एक छोटी कंपनी ज्वाइन किया आईटी कंपनी उसके बाद सीक्वल सर्वर मेरा टेक्नोलॉजी सेम सीक्वल सर्वर था डीबीए बट लास्ट ईयर पेंडेमिक में कंपनी बंद होगी उसका डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है कंपनी बंद हो गई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है अब मैं जरा मूव ऑन होना चाह रहा हूँ एज अ डीबीए बट चैलेंजेस दो है कि वो मेरा पिछला मैं कैसे उसको मैनेज करूँ मेरा कंपनी बंद हो गया डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम आएगा और दूसरा अभी दिस टाइम मार्केट थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है मार्केट का सिनेरियोस रिक्वायरमेंट भी थोड़ा हाई लाइक क्लाउड इंटीग्रेशन वगैरह तो मैं कैसे अपने आप को उसमें सेट करना चाहूंगा कुछ जरूरत नहीं कैसे है आपको करने की। आप सिंपल सा अल्हम्दुलिल्लाह यू ऑलरेडी डन द हार्ड जॉब। ठीक है, आप यस सिर्फ अपना एक टेक्स्ट बुक लो, सीक्वल सर्वर का और एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट का ईयर लो। में एक्चुअली जो मीनवाइल जो कंपनी बंद हो गया तो मैं एमसीएम कंप्लीट कर लिया अपना मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट फिर अभी क्या डरने की मास्टर बात क्या डिग्री है आपको? मास्टर डिग्री कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैंने जो बोला, हम लोग एक मेरी कंपनी में हम एक बंदे को हायर करे जो पीएचडी इन मैकेनिकल था, उसको हायर करे हम। ही वाज ओके जीरो एक्सपीरियंस इन आईटी एंड ही इज ओके डूइंग वेल इन स्नोफ्लेक राइट नाउ। ठीक है, या but you have already done that hard job. You have already worked on SQL Server. It's just that you need to take that book or take that course and brush up your skills. ओके Right? Regarding ओके that, regarding the situation that you are in where company closed, it's a यस general situation where यस most of the companies have closed down in pandemic. You can यस clearly say, आपका offer letter तो होगा ना? एक्चुअली मैं सर वो भी कलेक्ट नहीं किया मैं कुछ भी नहीं कंपनी ऑफिस ही रेंट आउट हो गया बंद हो गया क्लोज का फिर आपका ओनर आपका दुबई मूव हो गया मेरे पास आपका सिर्फ क्लाइंट साइड गया था उसका मेरा एयर टिकट है और बस इतना ही है बस कुछ वो भी नहीं प्रोड्यूस करो कि ये चीज गया था। ये अब आपको सैलरी कैसा मिल रही थी? सैलरी सर हाफ कैश था और हाफ बैंक अकाउंट था थोड़ा हाँ, जो बैंक अकाउंट है वो छोटा बताओ। कंपनी था हाँ, सिंपल सी बात है। आप बोलो कि मैं फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट में था। फ्रीलांसिंग करते हैं काफी सारे लोग। यस तो देखो, दे योर वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, योर वेरिफिकेशन ऑफ योर आई मीन योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कम्स लेटर। ठीक है, यस यस फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी, यू नीड टू हैव दैट स्किल्स। अगर यस आप स्किल्स में पास ऑन कर लेते हो तो देन भाई आपको कैसा पोजीशन करना है, आप 1.5 अच्छे साल से हो टच में नहीं नहीं है हो। तो कुछ मॉक इंटरव्यू होके वो हो जाएगा क्या नहीं, आपको जरूरत नहीं है। जो फ्रेशर की बंदे की जरूरत है, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे हो, आपको आपको है एक्सपीरियंस। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ब्रश अप योर स्किल्स। आपको एक्सपीरियंस भी है, काम करते हुए भी एक्सपीरियंस है, आपको उतने डरने की यस बट बात रोल्स नहीं मेरा है। उतना एडवांस नहीं था सर मेरा रोल्स नो उतना एडवांस नहीं प्रॉब्लम, था टूडेज नो मार्केट प्रॉब्लम। रिक्वायरमेंट जी जी जी, आप एक 2 महीने में आप आराम से डेडिकेटेडली बैठ के 2 घंटे पढ़ लेते, 1 महीने में आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। देयर इज नथिंग, यू नो, जस्ट ओके इम्प्रूव ऑन योर स्किल्स। रेज्यूमे अपडेट करो, पब्लिश करो। बात ओके आती है वेरिफिकेशन की, बोलो कि पैंडेमिक में बंद हो गया, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, मुझे जॉब मिल फेक रही लगा थी, ये सकते हैं क्या मेरा फेक लगा लगा सकते हो, पर जरूरत नहीं है। आप मेरे ख्याल ओके से जरूरत नहीं है, बट लगाए बस लेते हुए आप टेंशन नहीं है। प्रूफ मांगेगा तो मेरे पास सिर्फ वो कंपनी का एयर टिकट है और वो वीजा जहाँ बोलिए, बस सिंपल सी क्लाइंट बात साइड है। पे गया था और बस उतना ही है मेरे पास हाँ, जो बोलिए, मतलब ये चीज है, जैसा है वैसा बता दीजिए। पैंडेमिक में काफी सारे कंपनीज बंद हो चुके हैं, बोलिए कि ओके मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, बंद हो गई, आई कैन नॉट प्रूव माई एबिलिटी। देखो, ओके अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी स्ट्रांग ऑन स्किल्स, अगर यस आप स्किल्स में स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें माफ हो जाती हैं। ठीक है, ओके ओके नहीं ओके आप स्किल्स में नहीं है तो फिर ये सारी चीजें आपको सपोर्ट में लाना पड़ेगा, विच इज नॉट ओके नीडेड इन योर केस। ठीक है, ओके एक ओके टेक्स्ट ओके बुक लो, एक कोर्स लो, रोजाना पढ़ो, स्किल वेरीफाई ओके करो, कैसा करियर क्वेश्चंस। अभी सिक्वल डीबीए में करियर अच्छा है अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज में आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन एक चीज पे कंसंट्रेट करके कोशिश करो, मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और पैंडेमिक से पहले से ज्यादा अच्छा ऑफर मिलेगा आपको इंशाल्लाह। बहुत ठीक है, शुक्रिया वो पैकेज क्या करेगी वो जो पिछला पैकेज जैसा आजकल वो मैं फ्रेशर ने मैं तुम्हारा प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन का ऐसा कुछ होता है क्या आप कुछ पूछो, अगर वो बोला तो जरा कॉम्प्रोमाइज करके बोलो। 5 लाख आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 7 लाख पूछो, ओके नेगोशिएट करके 5 लाख पे आओ। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 5, तो फिर वो नेगोशिएट करेगा 3 से। ठीक है, ओके ओके समझ गए? ओके बहुत मतलब शुक्रिया उस बहुत तरीके से करो आप। Assalamu alaikum, शुक्रिया sir. बहुत शुक्रिया वालेकुम सलाम। जी जी Sir, जी my name is Anwar. I जी have completed my BTech in chemical engineering जी in 2022. Recently, I have passed out. जी। हाँ, Sir, I want to switch my career in IT field.
So which course is best in your क्यों अनवर, opinion? अभी तो आप केमिकल इंजीनियरिंग से निकले हो, क्यों स्विच करना चाहते हो? सर एक्चुअली 6 महीना सर मैं प्रोडक्शन में काम किया हूँ। हाँ सर सही नहीं लगा मेरे को, इसीलिए चेंज कर रहा हूँ। क्यों नहीं सही लगा भाई? आप दिल नहीं लगा रहे हो, सिंपल सी बात है। हाँ, कोई बंदा 10 साल से काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप करो। अभी अभी फ्रेशर हुए हो, अब आप इतने जल्दी आप डिसीजन ले रहे हो तो अच्छी बात नहीं है ना। देखो, आप समझ में आता है करो, क्योंकि आप 4 साल इन्वेस्ट करे, 4 साल इन्वेस्ट करे, आप उस पर करो, इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं है। नहीं आप करना ही चाहते हो तो मैंने आपको बताया है ना, इट्स अ चैलेंज दैट यू नीड टू फेस इट। जो आप जैसा मैं मास्टर्स के बाद मैं 10 महीने में अमेरिका में $10 के साथ घर में बैठा हुआ था, मुझे जॉब नहीं मिली, बट आई वांटेड टू डू माय करियर, नॉट नेसेसरली कि जो है आप काम करते हो तो उसी में काम मिलेगा या दूसरे में स्विच करना। इतना जल्दी डिसीजन मत ले। अब आप 4 साल लगा के केमिकल इंजीनियरिंग करे हो सकता है उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिले, बट आई सिंसियरली सजेस्ट, बिकॉज आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो ना, तो यू डोंट नीड टू स्विच इमीडिएटली। केमिकल में रहते हुए आप कोई पढ़ के कोई स्विच करना तो बहुत अच्छी बात है, बट अब घर में मशवरा भी करो, करके फिर आप डिसीजन लो, ठीक है? करना है तो सर मैंने अगर कोर्स आपको करना है स्ट्रैटेजी। तो समझो जी फ्रंट एंड बैक एंड आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा? देखो, मेरे लिहाज से मैं कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको क्या समझ में आता है वो देखना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, कैन यू रीड, एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड देन टेक अ डिसीजन, ठीक है? आपको क्या समझ में आता है? अब आप 4 साल केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आपको केमिकल इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रही है, तो अब मैं एक घंटे के सेशन में आपको क्या समझ में आएगा, मैं क्या बता सकता हूँ, बताओ? समझ गए ना? कोर्स ऑनलाइन करना सही रहेगा जी कि जी, इफ ऑफलाइन? एनीबडी इज नॉट स्पीकिंग प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज, आई एम हियर, आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स, प्लीज डोंट वरी। जी जी, एक मिनट अनवर से, लेट मी गेट कंप्लीट विद अनवर। जी अनवर। सर कोर्स अगर करना ही है तो ऑनलाइन करना सही रहेगा या ऑफलाइन करना? नहीं, आप कहीं क्योंकि फ्रेशर हैं, काफी सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके सीख लीजिए। एट द सेम टाइम आप उडेमी करना चाहते हैं, आपको समझ में आता कौन सा नहीं आता, उडेमी है, यूट्यूब में है, वीडियोस देखिए, आपको कौन सी चीज समझ में आता है उसका करना करेगा, शुरू करिए, ठीक है? यस सर। जी जी, थैंक यू अनवर Thank जी। you, कोई sir. दूसरे बात कर रहे थे? वालेकुम सलाम जी। एक मिनट, मोहम्मद जाकिर बात करो। जी जी बोलिए। हाँ, ये मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ऑलरेडी मैं कस्टमर केयर में वर्क करके फिर फील्ड पे वापस आया था। तो अभी तो मैं आईटी करियर पे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मतलब अभी कोर साइड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है ग्रोथ होने के अभी। तो मैं एक रिसेंटली प्रोग्राम देखा साइबर सिक्योरिटी बोल के, ग्रेट लेक्स कंपनी की तरफ से जी। तो वो लोग ऑलमोस्ट 1,25,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं प्रोग्राम, 6 मंथ का प्रोग्राम के लिए। जी। क्या करना ठीक रहता है क्या आपके हिसाब से? देखो, साइबर सिक्योरिटी इज ए वेरी वेरी टफ फील्ड है, ठीक है? और एंड ऑफ द डे आपको प्रोग्रामिंग करके करना पड़ेगा। आई वोंट सजेस्ट फॉर ए फ्रेशर टू साइबर सिक्योरिटी में स्विच होने के लिए, आई वोंट सजेस्ट, बिकॉज मैं खुद 3 साल साइबर सिक्योरिटी में काम करा। वेरी टफ फील्ड है, ठीक है? तो इफ यू कैन डू, आई मीन जाके देखो। उससे पहले आप पहले एक यूडेमी के कोर्सेस हैं, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेस हैं, आप कमिट करने से पहले 1.5 लाख कमिट करने से पहले एक 500-600 के 2-3 कोर्सेस ले लो। एक 2-3 हफ्ते लगा के आप पढ़ो। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके अपने आप को करियर बनाओ। बट इमीडिएटली जस्ट फॉर द सेक ऑफ बहुत डिमांड है, मिल जाएगा, वो बंदे पैसे तो कमा लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपका 1.5 लाख भी वेस्ट होगा, 6 महीने भी वेस्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है? जी जी, You want to continue or end the session now? Abrar bhai, we can continue, but we can stop the recording if possible. The recording is good. ठीक है, we can continue, no issues. I No, can. because you are not doing well also. So No, it's okay because we won't get this opportunity again, right? जी Assalamualaikum. जी जी, I'm वालेकुम Khalid सलाम Nuruddin. जी Yeah, I have around 3 years of experience in IT. Like I'm a जी Python developer, I'm a data scientist, I've worked on AI ML, but जी
अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट नहीं बचा है फील्ड में। हाँ हाँ मेरे से बेसिक काम भी नहीं हो रहा आजकल, तो मुझे क्या करना होगा समझ नहीं आ रहा। AIML ऐसी चीज है जो काफी बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गेटिंग नॉट इंटरेस्ट इन दोस फील्ड्स. ठीक है, you have already done the hard job. If you feel कि you cannot do, or you are not getting much interest in that AI, because उसके opportunities भी आना चाहिए, and this is more about like research oriented kind of a positions हाँ हो सकते हैं. तो यस आप ऑलरेडी पाइथन में हो, यस डेटा साइंस की तरफ मूव हो जाओ इंस्टेड ऑफ AI एंड ML काइंड ऑफ थिंग. नहीं तो अब जॉब स्विच करो, कोई नया मतलब maybe you are bored with the current job, switch over the job or do ओके something else. और पाइथन के प्रोजेक्ट्स के बुक्स मिलते हैं, बुक्स लेके स्लोली स्लोली एक घंटा प्रोजेक्ट पे लगाओ. नॉट नेसेसरली AML रिलेटेड हो, पाइथन के रिलेटेड कोई और दूसरे प्रोजेक्ट्स करो, बट डोंट ओके लीव दैट प्रोग्रामिंग. अब मैं 20 साल होने के बाद आज भी मैं हैंड्स ऑन कोडिंग करता हूँ मैं. ठीक है, ओके तो यू कैनॉट अवॉइड कोडिंग. लर्न न्यू थिंग्स, इससे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा. नाउ यू आर, maybe you are very good at what you have learned till now, that's why you are getting bored. Learn new things and you will get that interest, and then you will start exploring new things, inshallah. ठीक है इंशाल्लाह. एंड वन मोर थिंग, जी. आई एम अबाउट टू मूव टू क्लाउड थिंग, लाइक आई एम ट्राइंग टू गो टू गूगल GCP. हम्म. Is it good or Microsoft is good? I'm getting a little bit confusion in between. सब चीजें इक्वली मार्केट में अवेलेबल है. AWS हो, Azure हो, Google हो, it's all about like everyone has their own market. Nothing is better or nothing is it's up to your interest. आप जो करना चाहते हो करो, but when you Okay. learn it, आपका जो पाइथन का 3 साल का एक्सपीरियंस है, डोंट लीव दैट. दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग. पाइथन इज ए वेरी प्रॉमिसिंग लैंग्वेज, उसके लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं. एंड GCP हो, Azure हो, AWS हो, इट्स एन additional complement to your programming experience that you have right now. ठीक है, don't compromise on that. Learn it as an additional skill, but not as a primary skill. Your primary should be your Python, AI, and ML kind of a thing. Learn additional stuff on that particular part and add it as a complement from these cloud technologies. ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह जी. खैरन. जी. KNS कोई? जी, अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई. वालेकुम सलाम जी. काफी देर से आप पूछ रहे थे. जी जी मैं बोलिए. एंटरप्रेन्योर हूँ. जी मेरा वर्क पूरा फिजिकल चल रहा है अभी तक भी. एक जी 100 के करीब मेरे पास सेल्समैन है, 32 के करीब प्रोडक्ट्स है मेरे पास. जी. हाँ, मुझे अभी डिजिटल जाने का है. कोई फ्रीलांसर मुझे चाहिए था, क्योंकि अभी इनपुट्स बहुत कम रहते हैं. अलबत्ता स्क्रीन्स बनाना रहता है मुझे. उनके जो भी बताना है वो स्क्रीन का डिटेल्स मैं बता दूंगा अगर कोई मिल गया तो फ्रीलांसर. जी बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है. इट गोज टू 10,000 पीपल्स इन नियर फ्यूचर. जी. तो इसके लिए मुझे सजेस्ट कीजिए कोई ऐसा फ्रीलांसर जो मेरे लिए काम कर सके. मैं बॉडी शॉपिंग के फील्ड में नहीं हूँ. जी. मैं वो रिक्रूटिंग फील्ड में नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो मगर अगर कोई मिलता मुझे है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा. एक पॉइंट ये है कि आप सजेस्ट करें. दूसरा ये है कि मुझे सिस्टम बताएं कि मैं कहाँ से हायर करूं. नहीं, पर आपको रिक्वायरमेंट क्या है वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा ना. जनरली आपको होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप. सेल्स का ट्रैक रहता है, अकाउंटिंग ट्रैक रहता है, और कमीशन ट्रैक रहते हैं. अच्छा जी. स्टॉक अब इनपुट का बोलते स्टॉक का इनवर्ड आउटवर्ड का रहता है. एक काम करिए, आप मेरे लिंक्डइन में एक मैसेज कर लीजिए. इंशाल्लाह विल कनेक्ट लेटर एंड देन विल डिस्कस ऑन इट प्रोबब्ली. इंशाल्लाह दैट वुड आप एक CRM डेवलपर ढूंढ रहे हो शायद. जी जी. आप CRM मॉडल बनाना चाह रहे हैं आपके लिए, मेरे को कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल. आपकी सॉफ्टवेयर की नॉलेज बिल्कुल जीरो है मेरे पास. ठीक है सर. इसलिए आप मुझे आप लिंक्डइन में मैसेज करिए. विल टॉक लेटर इंशाल्लाह, बिकॉज़ इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट as to what the current topic is. हाँ, ये चैटिंग पे मैं भी किया हूँ. मैं मेरा नंबर भी डाल, व्हाट्सएप है जी ओनली. तो इस तरीके से आप जरा कर लीजिए. मैं आपके ये चार्ट पे डाल दिया मैं.
अच्छी बात, ठीक है। आपका मेरा नाम ख्वाजा नाज़ुम ज़बानी है, शॉर्ट फॉर्म KNS है। अच्छी बात, ठीक है। आप कहाँ डाले मैसेज नंबर? 9676759298। अच्छा, ठीक है, व्हाट्सएप ओनली, फ्रीलांसर इन ऑफिस स्टार्टिंग। जी जी जी, थैंक यू सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। एनीबडी एल्स? एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं ये पावर बीआई और एज़्योर डाटा फैक्ट्री में से एक चूज करना चाह रहा था, कौन सा करियर बेहतर रहेगा, जैसे कि पावर डेटा। बीआई अलग है, अजूर डेटा फैक्ट्री अलग है। जी जी। दोनों तो कॉम्प्लीमेंटिंग भी हो सकते हैं, दोनों भी सीख लिए तो भी बेहतर है आपको। जी नहीं, फ्रॉम नॉन आईटी से अगर आईटी में जाने के लिए तो बेहतर कौन सा रहेगा, ये मैं आपसे मशवरा देना। दोनों रिलेटेड फील्ड हैं बेसिकली। आप पावर बीआई से आप क्या करते हो, रिपोर्टिंग बनाते हो। अजूर डेटा फैक्ट्री से आप क्या है, उसमें डेटा इंजेस्ट करते हो। तो अजूर डेटा फैक्ट्री में फिर आप पता नहीं कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें, तो पाइथन है या कोई और चीज लैंग्वेज सीख रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। पावर बीआई आप करोगे तो वहां पर इमीडिएटली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। अजूर डेटा फैक्ट्री ह्यूज है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो वो पहले वो हासिल करो, फिर एडिशनली आप दूसरा भी हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पावर बीआई में आप माहिर हो जाओगे, अजूर डेटा फैक्ट्री भी सीखना शुरू करो, उसको भी ऐड करो, बट प्राइमरी स्किल पावर बीआई एंड रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन वो बना के भी आप कर सकते हो। नॉट, आई मीन बोथ आर इंटर रिलेटेड फील्ड्स है, दोनों एक दूसरे को यूज होते हैं। तो जी ये जी, भी वही काम आएगा, वो प्राइमरी भी स्किल काम जैसा आप आएगा। प्राइमरी स्किल को पावर बीआई रखना बेहतर रहेगा बोल रहे हैं। कोई भी क्योंकि रख दोनों सकते भी हो। टूल्स है वास्ट, इसको भी मतलब दोनों सीखने में मतलब फोकस किस में ज्यादा करना बेहतर रहेगा। आप एक मार्केट एनालिसिस कर लीजिए ना, मतलब बेसिकली किसको डिमांड ज्यादा है। अगर आप एक फॉर एग्जांपल 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आप अजूर डेटा फैक्ट्री में सर्च करते हो, जॉब ओपनिंग्स कितने आते हैं वो देख लो, पावर बीआई के जॉब ओपनिंग्स कितने आते हैं देख लो, उस बेसिस पे आप अपना खुद डिसीजन ले लो ना। बोथ आर, मैं मतलब आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू टू मेक ए चॉइस बिटवीन दोस टू, बिकॉज आई डू बोथ नाउ। मेरे मेरे प्रोजेक्ट में दोनों भी काम करते हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर पीपल ऑन बोथ साइड्स। तो पावर बीआई का भी बंदा चाहिए मुझे, अजूर डेटा फैक्ट्री का भी बंदा चाहिए। सो व्हेन द डिमांड इज इक्वल, इट्स जस्ट अ प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, आप कौन सा So काम I, करते हो काइंड ऑफ इट। in terms as you are already having the team, so if you have a team of this group, how many of them will be in Power BI and how many of them will be in Azure Data Factory, just for an idea? पावर बीआई में 10 बंदे हैं, अजूर डेटा फैक्ट्री में 5-6 बंदे हैं, काइंड ऑफ ए थिंग। अच्छा। You cannot make a decision just on that because like if you look at a larger group, Azure Data Factory के ज्यादा है, Power BI के कम है, ऐसा भी हो सकता है। मेरी टीम में अलग है काइंड ऑफ, समझ गए? तो दो बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजीज। आप एक को छोड़ के दूसरा प्रेफरेंस मत दो, एक पे माहिर बनो जो आपको अच्छा समझ में आता है, फिर आप दूसरा भी हासिल करो काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज दोनों रहने से दोनों आपका डिमांड भी बढ़ सकता है। आप एक पे दूसरे पे तरजीह मत दो, मैं बोलने का मकसद ये है। एक पे माहिर बनो डेफिनेटली, बट लर्न द अदर थिंग एज वेल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सपोर्टिंग इट ऑन दैट थिंग, एंड वेरी इजी, बहुत आसानी के साथ सीख सकते हो। ठीक है? Sir, in terms of salary, both are being offered the same, like 4 years of सैलरी के experience. बारे में फिक्र ही मत करो, अच्छे मिल जाएंगे। द मोर बेटर knowledge you have on any technology, the more commanding salary you can demand. ठीक है? Okay, so both are जी, equal in terms of salary. both are equal। जी जी जी, Okay, शुक्रिया। ठीक है। कोई और? Riyaz bhai, Assalamu alaikum. वालेकुम। Basically, I have an 18 years of experience in some other industry. I जी wanted to take your advice on certain things. I'm from sales side. In the interest of time, probably I may not be here, but then offline, would I be able to connect with you somewhere? जी जी, आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, वी कैन टॉक लेटर, नो इश्यूज इंशाल्लाह। All right. So I sent you the request. If you can just accept that from Abdul जी जी, Wasi. ठीक है Okay. इंशाल्लाह, Thank you so जरूर। much. Thank जी you. Jazakallah. जरूर जी। एनीथिंग एल्स? सर वन लास्ट थिंग, ये जी जो पावर बीआई डेवलपर्स आप देख रहे हैं टीम में रिक्वायरमेंट है बोल रहे हैं, डू दे नीड टू नो एनीथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स और पाइथन? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट पावर बीआई एंड सीक्वल इज नहीं, सफिशिएंट? पावर बीआई के बेस कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो
मतलब मेरी टीम नहीं है, मेरी पैरेलल एक टीम है जो पावर बीआई देखती है. There are multiple ways you can pull the data and do reports on top of it, right? So what is the multiple ways you pull it? How do you optimize performance optimization कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं? These are the things. So purely related to Power BI, what are the features that it offers? How do you use a particular feature? What is the, how is that used? Which is better? Which one you use for one scenario? Which one you use for another scenario? Those kind of questions will be asked. ठीक है? Okay. Okay. जी. और कोई चीज? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी जी रियाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. जी बताइए. सर ऐसा है कि आईटी फील्ड में आई मीन मिक्स एक्सपीरियंस मोर देन 20 इयर्स हो, जी और बंदा आज के अगर लेटेस्ट जो आईटी टेक्नोलॉजीज है उसको अडॉप्ट करना चाहे हम्म, तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? आई मीन जी स्टेप जी बाय स्टेप सर. जी. जो जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है आईटी में आने के बाद, वो पीपल के साथ मैनेज करना, टीम के साथ कोलैबोरेट करना, टीम से कम्युनिकेट करना. दिस इज द मेजर चैलेंज दैट पीपल फेस वंस दे एंटर इनटू a particular domain, especially IT domain, because it's a very challenging, very demanding kind of a domain. तो आपका जो, फॉर एग्जाम्पल, और somebody who is having 20 years of experience, he has already gone through that phase. Like, he is well versed with communicating people, collaborating, all those things. It's not about, like, whether he can settle down in the team or not. It's not a question about that. It's about a question of whether I can be able to adopt a new technology or not. Right. Okay? So there are multiple options, like, as I have said, like, you want to improve on your current technology, an additional IT layer of what you are doing currently, that is also a possibility. But this is more, the focus is more about completely switching the technology. For you, Yes. switching the technology is the challenge, not about settling in the team and company. Right. मेरे एक साथ लास्ट 2 महीने पहले एक बंदे को यूज करके फेक एक्सपीरियंस लगा के, he cracked that interview, he joined the team, and Okay. 5-6 महीने ही चलाया. मतलब without knowing the Python language, he ran the show for 5 months. Oh, ठीक है? okay. So because he was well versed in sales, people management, kind of a thing, he managed the team so effectively कि 5 महीने चलाया शो बंदा. जी जी 3 महीने के बाद बंदा आता है, बोलता है कि भाई रियाज भाई, मैंने 3 महीने तो शो चला लिए, अब मेरी कमजोरी पढ़ना बाहर हो गई. पीपल स्टार्टेड टू नो कि आई डोंट नो पाइथन, व्हाट शुड आई डू. भाई अब जो डिफिकल्ट स्टेप है वो आप हासिल कर लिए, अब जो इजी स्टेप है पाइथन लैंग्वेज सीख लेना, आप उस पे क्यों पीछे हट रहे हो? जी. राइट Kind of a thing, राइट. right? So Right. for you, the difficult step is, like, it's not about settling down in a team. It's It's not about environment, basically the technologies. Yeah. the technology. Technology is the most easy part that you can learn. Yes. आपको जो समझ में आता है वो चीज कर लीजिए. पर रियाज भाई, जब आप इंडस्ट्री में आएंगे, सपोज करो मैं अभी अबू धाबी में हूँ यहाँ पे, ठीक, जी जी जी. और एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं वो अभी देखेंगे इज नॉट एक्चुअली अप टू द पावर ऑफ द करंट एक्चुअली टेक्नोलॉजीज. जैसे सी प्लस पे कभी काम कर लेते हैं हम लोग, कभी VMware पे काम कर लेते हैं, कभी एक्चुअली आप एक Qt फ्रेमवर्क है, उसका QGIS है, उस पे काम कर, मैप पे काम कर लेते हैं. तो इन सब चीजों को लेके जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं, इंडिया और इवन के यहाँ भी अभी देख रहे हैं, तो वी आर नॉट एक्चुअली, वी कैन नॉट कोप अप विद द लेटेस्ट. नहीं, देखो, ये दिमाग से निकाल लीजिए आप. कोप अप, अच्छा जी. that is the mindset I talked about. Okay. There's nothing called you cannot do it. There's nothing called you cannot cope it up. It's just about whether you can adopt it or not. As simple as that. It's just a mind change. But the experience actually maybe your hurdle. नहीं, no issues. आपका जो experience है, आप already experienced हो. Just that you are learning a new skill. ठीक है? That will be counted in with the new skill. 20 Yeah, साल you जब बोलेंगे can, आप, तो you आपको तो can. इंटरव्यू नहीं मिलेगा सर पाइथन के लिए. मैं कंपनी में था, एक बंदा, हमारा जो डायरेक्टर है, he came from BHEL with 20 years of experience. Now he's a director in my company. Okay. ठीक है? तो he was completely out of, I mean, he was working as a BHEL. वहाँ पर 20 साल काम करके IT में जब शिफ्ट हुआ, तो he had that people management experience and all those things. He learned new skills and now he became a director. He is into managing stuff.
ही इज इनटू डिलीवरी स्टफ, नॉट नेसेसरली प्रोग्रामिंग करना जरूरी है, ठीक है। आप प्रोग्राम मैनेजमेंट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो, नहीं, टीम मैं चलाना भी आपसे कर इसी सकते तरफ हो। जा रहा था कि 20 साल के बाद जब आप प्रोग्रामिंग के लिए फिर जा रहे हैं आप, तो आपको एक फ्रेशर की टीम के साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। दैट विल बी डिफिकल्ट पार्ट फॉर एनीवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ 20 रियल एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स। आप अपने आप को आसान रखो, आसानी हो जाएगी नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह से। जी मैं जी ये कह रहा हूँ रियाज भाई इसमें जी कि जी अगर ऐसे लोग जो स्विच करना चाह रहे हैं, व्हाई टू प्रोग्रामिंग, हम लोग कोई दूसरे प्रोग्राम मैनेजमेंट फील्ड में या कर सकते डिलीवरी हैं। हाँ उसमें हाँ हाँ जी उसको देख सकते हैं हम लोग, या फिर जी जी। प्रोग्रामिंग में ही रहना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी 20 साल के हैं, जी प्रोग्राम पीएमपी सर्टिफिकेशन कर लीजिए, मैनेजमेंट की तरफ जाइए। यू नॉट नेसेसरली नीड टू रन एक्चुअली कोडिंग, राइट? यू कैन डू मैनेजमेंट रिलेटेड स्टफ, यू कैन बी इनटू डिलीवरी, यू कैन बी इनटू रिलीज मैनेजमेंट, यू कैन बी इनटू प्रोग्राम मैनेजमेंट, यू कैन बी इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। दिस आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आप जी इस फील्ड के बारे में मालूम करिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम मैनेजमेंट है, आप एक बड़े प्रोग्राम को चलाते हो, इसमें डिलीवरी होती है, टीम कोऑर्डिनेशन होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, जी जी राइट आप उसमें कर सकते हो। नॉट नेसेसरली आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, बट वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, हाउ आर दे रिलेटेड विथ ईच अदर, बैक एंड कौन सा है, फ्रंट एंड कौन सा है, राइट राइट एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है। ये राइट चीज आप समझ जाएंगे तो आसानी के साथ हो जाएगा। तो आप एक कोर्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में, प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, ये वेरियस टर्म्स है। जी अब इसके बारे में यूट्यूब में भी आप देख लीजिए, जरूरत जी पड़े तो यूडेमी में से आप एक इसका फुल फ्लेड्ज कोर्स खरीद लीजिए, जी देख लीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स, एंड जी देन यू कैन इजिली स्विच ओवर इंशाल्लाह, नो इश्यूज। जी थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है, नो इश्यूज। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, सॉरी। वालेकुम सलाम। जी, और कोई? I know we have we planned for 1 hour, but it went about 2.5 hours. Ji, any questions? I'm more than happy. Don't worry about it. If you have any questions, connect on LinkedIn, and after some time, inshallah, we'll also share this on YouTube. The link will be published in some time, but inshallah you can it's very easy to switch over to IT. That's the whole purpose of this session. Alhamdulillah, you have asked me various questions, and it's very easy. It's just a mind, just change your perspective towards it, and then you can easily do it. It's just like a systematic approach. कहीं भी हारना नहीं है, सिंपल एज दैट। कहीं भी जो है मायूस नहीं होना है। कोई भी अगर मुश्किल चीज आती है तो उसको समझो क्यों मुश्किल है, फिर आपको अंडरस्टैंड करो, उसको हासिल करो, फिर आसानी के साथ उसको टेक ओवर कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली स्विच इट ओवर इंशाल्लाह। ठीक है। एनी इफ वी डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, we can stop inshallah. Yeah, Riyaz, we just request you to accept the LinkedIn request. जी जी जी, let me do it after this thing, this particular part. Jazakallah. जी ठीक है। If all good, alhamdulillah, we'll take a break. चलो, जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम।